मॅच खेळ हल्ली पळय हिरो खंयच्यान हाडली रे पानां कसली रे ती सेंटर्स अशे आवाज येता आवाज येता आवाज येता सेंटराक दोग दोग जण या मरे अबे दोनों साइड में कर सकता है साईराम सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तांणी सगळ्यांनी ग्राउंडार वचचें काळे स्क्रिना कडेन नियर द ब्लॅक स्क्रीन सगळ्यांनी ब्लॅक स्क्रिना कडेन वचचें वाईट वाईट घालू मी वाईट घालू फुलां एक्झॅक्टली एक खंय घालतली येवन हां हय तेच पळय हांगा येतकीच घालतली ग्रावंडार क्रॉस पळयतना वयतली क्रॉस करतना ए फुलां केन्ना घालता रे फुलां केन्ना घालता मागीर मागीर प्लेयर भितर येतात भितर वयता हय हय आतां काय ना आतां काय ना आमचे बरोबर येवनी ते चप्पल काडल्या म्हण काय प्रॉब्लेम ना चप्पल घालून वचूं चप्पल घालून मागीर तो घालनासतना गेलो तरी जाता चला 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 गोड श्रेया ते पुरो वो केला तें मागीर कर मरे तें ना ती हे जाले पळय लोक सुटले चल स्वामी चल या या मामी ते पळय स्वामी पळय लाय थंय पळय मामी लायतली ती मामी सांग जालें चल जालें श्रेयाच्यान सगळें उलटी चलो 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 और ऐसे इस तरफ का थोड़ा घास ये ए चला चला शाळेनं चला चला बाय सगळं बेगी वाज माय घाम येतला तुमका चल चल खंय वता चला वच कडक जावपा लागेल चल तू चलो उसके साथ
हेलो साईराम. 1.2 एग्जैक्ट. हाँ ओके रेडी गाइस. हेलो चेक. We have to start. चलो साईराम. साईराम. माइक मध्ये. ओके रेडी साईराम. स्वदेवाचेभिर्वाजिनीवती ीनामवित्रकरो एताय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् शान्ति 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रूपं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचावशिष्यम् अवपश्चातात् पुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आर्चरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदर एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजा परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः साई राम दीप प्रज्वलन से अभी शुरुआत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट प्रेसिडेंट श्री महेश पावस्कर जी को कि वो शुरुआत करें। कृष्णकांत जी आप भी, ईशान बकली जी, श्री यादव जी आप भी क्या था। गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शान्ति शान्ति शान्तिः। रिक्वेस्ट करूंगा तो जीरो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेट प्रेसिडेंट पीछे जो स्टेज है वहाँ पे चलें। हाँ, पहले फ्लैग का अनावतरण करेंगे।
उसके बाद जय बोलो साई राम। भगवान श्री जी की जय। साई राम। यहाँ स्टेज पे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्णकांत जी, महेश पावस्कर जी, ईशान जी, ईशान भाई हांगा फाटल्यान बसपाक दोन शब्द हा ते बोलणार जस्ट 1-2 मिनिटं आपल्या शूटिंग मध्ये. संजय भाई, कोच संजय भाई. हाँ ये या हाँ 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 संजय भाई अच्छा बसा ना तुम्ही. ईशान भाई सिद्धेश भाई चालू करू नी. ते प्लेयरांक ते वळतात. साईराम, सब प्लेयर्स का आगमन हो रहा है पिच के ऊपर. तालियों के गड़गड़ाहट से उनका आगमन कीजिएगा. हमारे स्वामी बाल स्वामी भी उनको लीड कर रहे हैं सामने से. हमारे ये सारे बाल विकास के बच्चे करमली समिति से वेलकम करते हुए सारे प्लेयर्स जो आज इस क्रिकेट लीग में खेलने वाले हैं. आज इस प्रोग्राम के शुरुआत में आज हमारे साथ मंच पे विराजमान है हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री महेश पावस्कर जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री ईशान बकले जी, इस ग्राउंड के और चिकालिम के सरपंच जो हैं वो मिस्टर यादव जी, संजय नाइक जो हमारे कोच हैं इस टीम के, ये सारे आज हमारे साथ विराजमान हैं. तो प्रोग्राम के शुरुआत में स्वामी का जो एक कोट है, लाइफ इज़ अ गेम लेट्स प्ले इट, उसी के संदर्भ में आज हम इस क्रिकेट मैच के लिए जुड़े हैं. स्वामी का जो मैसेज है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी ने कहा है कि जैसे कि लव जो प्रेम है उसको आनंद हर वक्त हमको करना है और उसी के लिए हम आज इस क्रिकेट मैच के दौरान उसका आनंद लेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश पावस्कर जी, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो 2 शब्द करके इसका शुरुआत करें. ओम श्री साईराम. भगवान बाबांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. आणि हांगा जमिल्ले सगळे आणि जे पळोवपी आसा त्या सगळ्यांक म्हाजो प्रेमळ साईराम. तर हो एक अविस्मरणीय असो क्षण आसा की आमकां हो क्रिकेट मॅच भगवान बाबान एक योगदान दिलां की हें गोंयान आमी बरें सुरू करचें. आणि बाबा जशें म्हणटा लायफ इज अ गेम प्ले इट, त्या प्रमाणे जीवन सुद्दां एक खेळ आसा. आणि असोच एक सुंदर मॅच पुटपर्तीक जाल्लो आणि त्या आमी जुन्या आठवणी की सगळे जगावयले प्लेयर पुटपर्ती येयल्ले. त्याच प्रमाणे आज आमचेय अशे भुरगे माणुकले भुरग्यां कडच्यान जस्ट प्लेयरांचें स्वागत जालां. आणि अशे
सुंदर असो कार्यक्रम आयज आमकां करूंक मेळटा. भगवान बाबाच्या चरणी विनम्र प्रार्थना करता की स्वामी आमचे कडेन हे बरे भशेन करून घे आनी तुजे कृपेक आमकां पात्र कर. जय साईराम. धन्यवाद महेशजी. हांव आतां रिक्वेस्ट करता ईशान बाब जे फाटले रणजी प्लेयर जावन आसा आनी तेंचे खुबशे मिरेकल्स आसा क्रिकेट बद्दल, तांणी 2 शब्द सांगचे. My humble pranam at the lotus feet of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, and I offer my gratitude for allowing to speak these 2 words. So, Sai Ram. So let me start by making a what you call my first speech by saying that Swami is omnipresent. He is present everywhere, all time, at all places. So you all should believe that Swami is here with you, and he is here to guide us, our inner confidence, self-discipline and self-confidence. Second, he is omnipotent, all-powerful. You just believe it. He can, whenever you are in the most difficult times, he will come to your rescue as you deserve. And third is Swami is omniscient. That is all-knowing. Now we started with Vedas. Swami knows all Vedas, all material university what teachings, everything. So we are very fortunate to be a part of Swami's organization, and I hope all these cricketers take this advantage of their spiritual growth and integrate with their cricket career, so then definitely they can shine better in their future career. Thank you very much. थँक्यू ईशान बाई. तुमचे प्रेजेन्सूच आमकां खुबशे मोटिवेटींग आसा. डिस्पाइट युअर एज, यू आर सो यंग एट हार्ट एंड यू कीप ऑलवेज मोटिवेटिंग अस. नेक्स्ट इन लाइन इज़ जी यादव जी, जो सरपंच है चिकाली के और इस ग्राउंड के जो मालिक भी हैं, और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सत्य साई बाबा जो हम उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने हमको बहुत सारे टीचिंग्स दिए हैं. उसमें से ये एक टीचिंग को हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें से हम ट्राइंग टू रियलाइज लव थ्रू स्पोर्ट्स. उसमें आपका योगदान बहुत ही हमारे लिए बड़ा है. आप भी 2 शब्द कहिए, ऐसी हमारी आकांक्षा है. ओम साईराम. सगळे साई भक्तांक मायमोगाचो येवकार. आनी आज जेन्ना हांव येयल्लो पळय आनी साई देवांचो आशिर्वाद हे ग्राउंडाचे फेसिंगाक आहा पळय, खूब बरें दिसलें की साई भक्त प्लस साई देवांचो आशिर्वाद जे ग्राउंडार हांगा पडला पळय, रियली एक पॉझिटिव्ह फिलींग येयला. आनी रायट डायरेक्शनान तेजो फेस प्लस हे फोटो लायला पळय, ईशान दिशा म्हणटा तेका. सो फूल आशिर्वाद आमकां ग्राउंडाक मेळटा आनी हांव मनांच्यान खूब हॅपी जाला. आनी सगळे साई भक्तांक मना काळजांच्यान देव बरो करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हो ग्राउंड चूज केला. सगळे साई भक्तांक धन्यवाद करता, कारण हांवें चिंतून आसलें, म्हाका दिसलें की एक नॉर्मल क्रिकेट मॅच जातलो, पण मंत्र उच्चारण जालो पळय, एक पॉझिटिव्ह वायब्रेशन येता जेन्ना एक देवाचो कार्य जाता. सो दॅट एरिया तेजो वायब्रेशन वाडटा. सो थँक्स फॉर डुईंग दॅट. आज एक बरो दीस आनी बरे दिसाचो सुरवात असो जातलो म्हणून चिंतून हांवें. सो थँक्यू वन्स अगेन सगळे साई भक्तांक धन्यवाद. थँक्यू तुमकां. तुमचो काळीज जळीज मोठे आसा, तुमी आमकां इतकें वेलकम केलें हेच्या बद्दल. नाव आतां लास्ट आमचे जे कोच आसा संजय बाब, जे आमचे डिवोटी आसा आनी नाव ही इज प्लेइंग अ न्यू रोल ऑफ बीइंग अ कोच. तांकां रिक्वेस्ट करता की तांचें कितें आसतलें आजचो रिपोर्ट. ओम साईराम. बरो इनिशिएटीव हो. दिसा कशें क्रिकेट आमी वेगळ्या पद्दतीन खेळटा. आयज आमी देवाच्या फुडें क्रिकेट खेळटा. एक वेगळे सगळ्यांक फिलिंग्स आसतले आनी गेमूच वेगळी आसतली. तशी यादव सरान जशी फॅसिलिटी क्रिएट केल्या आनी क्रिकेटी खातीर खंयचो सदांच सपोर्ट आसता. साई भक्तात आमी फुडें येवन जशी क्रिकेटीक आमी सपोर्ट करता, एक वेगळी उर्जा. एट दीस लेवल भुरग्यांक सिलेक्ट करून ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन फुडें व्हरप हेंय खूब म्हत्वाचें आसा. सगळेच गोवा खेळूंक सोदता. गोवा GCA ऑर BCCIन खेळपाक सगळ्यांक मेळना, पूण एक गोवाक रिप्रेजेंट करपाची सगळ्यांक इच्छा आसा. हांव भुरग्यां कडेन तशें उलयतालो आनी तांच्या मना पासून दिसलें एक बरी ऑर्गनायजेशन आनी आमकां हांगा खेळपाचें आसा म्हणून. वेरी गूड आनी बरें केलां आनी सगळ्यांनी ऑर्गनायजेशन. थँक्यू फॉर दॅट. थँक्यू संजय बाब.
एक बरोचसो मेळ जावन दिसता की हांगा स्पिरिच्युअलिटी आनी स्पोर्ट्स हाजो एक समागम जाल्लो आसा आनी तातूंत सगळे भशेचे म्हणजे अर्दे आमी स्पिरिच्युअल अर्दे स्पोर्ट्समॅन आनी अर्दे एडमिनिस्ट्रेटर्स हांचो सगळ्यांचो मेळ जावन हो एक मॅच आज रंगतलो आयज हांगा आनी तातूंतल्यान भुरगे सिलेक्ट जातले टू प्ले टुवर्ड्स द नॅशनल लीग म्हणजे एक वाटचाल सुरू जाल्ली आसा गोंयच्यान हेजे पयलीं आमी मॅचेस केल्या बट नेवर इन अ सिरियस एनवायरमेंट इन अ सीजन बॉल टुर्नामेंट इज अ फर्स्ट टायम गोवा आमी थ्रू सत्य साई बाबाच्या ऑर्गनायजेशनांतल्यान आमी एक फुडें प्रोफेशनल लिगांतल्यान आमी एक फुडाकार घेतला ऑल बिकॉज ऑफ विशाल नाव आय रिक्वेस्ट विशाल टू कम हियर अँड स्टार्ट द प्रोसिडींग्स सो सगळ्यांक धन्यवाद हांगा तुमी आयिल्ल्या बद्दल नाव वी विल स्टार्ट विथ द एक्चुअल मॅच प्रोसिडींग्स विथ द पिच रिपोर्ट थँक्यू साईराम Thank you. Yes. Sai Ram, Sai Ram. ड्रोन येऊ लागला ड्रोन फोन केलाय तो लरा ड्रोन ला स्टँड अप फॉर नॅशनल अँथम हे झालं की पूजा होईल तू त्याला पण उभा राहायला सांगतो ना पूजा होते अशी आम्हाला अशी एक दोन लाईन अप करूया अभिजित ए बाबू बॅट मगेला हातातलं खाली वर करा ना फोटो एक दोन बार करा तो बॉल घालता की तुमका बॉलर Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, brothers and sisters, with the divine blessings of our divine master Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, we are ready to commence the first match
of the Sri Sathya Sai National Cricket League here in Goa in this picturesque ground, picturesque surroundings with Swami's divine blessings. May I request everybody first to stand up for our national anthem, please. All the sisters and brothers in the Shamiana, can you please stand up for the national anthem?
रक्षो अरष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतौ वच्मि सत्यौ वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अनुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता त्वं वान्मयस्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आत्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्मस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं भूर्मभूर्चाय वर्णदीं सदनन्तर अनुस्वारः परतरः अर्धे दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तम् अनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसङ्घारं सगोमहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः सिद्धायन्ति छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मौषकम्बुजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धालुलिक्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देहजगत्कारुणमर्चितं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनामपरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नराशिने शिवसुताय वर्णमूर्तये नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेव देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I request
रिक्वेस्ट करता आमचे जे प्लेयर्स आसा तांणी हे चिमुकल्या बालविकासच्या भुरग्यांचो सत्कार करचो एक बारीकशे मोमेंटो दिवन. साईराम. तांकां दिवन ती दिता. शी इज गिविंग ऑल.
start of the Bhagwan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai National Cricket League here in Goa. For the first game, we are ready to start, and I request the two umpires to make their way into the middle. Big applause to the two umpires. The first game is between Sai Avengers, North Goa, and Sai Coastal Fighters, South Goa. Sai Avengers, North Goa won the toss a few minutes back and have decided to bat first. We are in all readiness to start the Sri Sathya Sai National Cricket League cricket match here in Goa. The fielders are out there in the middle, and we find the two batters also making their way into the middle. And with the permission of our Divine Master, we'll start in just a few minutes from now. This will be a 2020 game, and it'll all be played as per ICC BCCI rules. First 6 overs will be the power play. Only 2 fielders outside the 30-yard circle, and 4 overs per bowler. Of course, you can use any number of bowlers, in which case maximum of 4 overs per bowler. And it's getting in readiness to start this first game. It's a lovely setting here in Goa. It's absolutely picturesque surroundings. It's a lovely cricket ground here, actually. It's the stadium is under construction to the left of us. The stands are under construction, but the ground is lush green. It's a lovely wicket out here. It's we saw the wicket just a few minutes back, and we found it to be having just a tinge of grass and very hard, well rolled. A little bit of moisture, which I guess as the day progresses should evaporate. And there should be decent amount of carry to begin with. On the far end of the ground from where we are broadcasting, the grass is lesser. We found it rather brownish surface, so that end could probably help the bowlers, particularly the spinners. As the afternoon comes in, we could see the ball turning at that end. The end where the batter is getting ready to take first strike is the end where we found a fair amount of grass, around 3 mm of grass, and we'll see how the ball behaves in the first few overs or so. The whole genesis of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba National Cricket League is to spread Bhagwan's divine message of love, camaraderie, togetherness, oneness, unity. We are all one. And that's the whole genesis of the Sri Sathya Sai National Cricket League. Cricket is a medium. Cricket brings us together. Cricket teaches us team spirit. Cricket teaches us unity. Cricket teaches us how to play with each other. A fielder needs to take a catch for a bowler to get a wicket. 2 batters out there should run in properly with each other between the wickets for a run to be completed. There's so much to learn in cricket in terms of teamsmanship. And that's why cricket is the ideal medium to spread Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's message of love, camaraderie, unity, togetherness, oneness. We are all one, bound by love. Sai Avengers North Goa won the toss and decided to bat first. The 2 batters out there in the middle. The umpire is having a good look. Yash Gadekar will take strike to the very first delivery. Rajat Sheth will take the first delivery. Yash Gadekar is at the non-striking end. The 2 boundary riders are at third man and at long leg. Here's the first ball. Short in length, also rose after pitching. You can see, we did say that this end of the ground, we could probably see the ball talking in the first few overs. There's some grass over there. We'll see if there's movement.
take us at least a few deliveries to see if there is some movement. Also, how much is the bounce? Is the ball rearing up and coming up? As I welcome into commentary position the man of the show, here's the second delivery. Half push, half drive into the covers. None for none it remains as I welcome into commentary position Vishal Vernikar, who is one of the man behind the show, as I said, with Swami's grace. साई राम के सर, बहुत ही अच्छा माहौल, एक अच्छी मैच चलती हुई, बल्लेबाज स्ट्राइक पर खड़े रजत जो सामना करेंगे गेंदबाज कौस्तुभ का, दोनों ही अपने आप में एक काबिल खिलाड़ी माने जाते, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज बोल के जाने वाले खिलाड़ी। पहली गेंद खेलने की कोशिश, गेंद सीधी जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, ना कोई रन ना कोई नुकसान। बहुत ही अच्छी गेंद सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे कौस्तुभ। यहां पर अभी तक कोई मौका नहीं दिया है कौस्तुभ ने बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का, बांध के रखा है। बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ गेंदबाजी होती हुई। यहां उपस्थित सभी दर्शकों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा। देवी और सज्जनों, कमेंट्री कक्ष से आप सभी के लिए एक छोटा सा पैगाम। इस मैच के लिए भगवान ने भेजे 3 बड़े विद्वान, 2 है हमारे आज के ऑफिशियल। उछलती हुई गेंद फिर से विकेट कीपर के दस्तानों में। माफ कीजिए, वापस वहीं से मैं शुरू होना चाहता हूं कि 3 बड़े विद्वान, 2 है हमारे ऑफिशियल अंपायर और 1 हमारे कमेंटेटर कृष्णकांत सर। अब हमारी जिम्मेदारी है करना आपका मनोरंजन और सम्मान। इन सभी खिलाड़ियों ने सहजता किया अपना काम, तो यकीनन अगली मैच तक आ जाएगा इस मैच का अंतिम परिणाम। अपने हृदय को दीजिए थोड़ा सा आराम, जपते रहिए यहां पर श्री सत्य साई का नाम। अगर मैच के दौरान इन दोनों टीमों में होता रहेगा हाई वोल्टेज वाला काम, मैच के दौरान जपते रहे सत्य साई का नाम, तो यकीनन दिख जाएंगे आपको इस मैदान में भगवान श्री सत्य साई राम। अगर धूप ज्यादा हो तो अपनी जगह पर करे थोड़ा सा विश्राम। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपके लिए उपलब्ध है पीछे जलपान। अब मैं आपसे थोड़ी सी विदा लेना चाहता हूं। आखिरी चरण में होंगी बाकी की बातें। इस 1990 क्रिकेट स्टेडियम पर है भगवान ने बनाया हुआ खूबसूरत सा आसमान। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। विशाल वेर्नेकर इतने बड़े कवि है, मुझे आज पता चला। पावस्कर साहब बोल रहे हैं तो शुरुआत है, आगे चलते चलते देखिए क्या होता है क्या। So as Vishal was narrating that lovely poem scripted by him, runs on the board, 1 without loss. First over bowled, 1 without loss. First ball from the commentary box in Atul Fatte, the bowler, to Rajat Sheth. First run from Kaustubh, just the one, so good start there by Kaustubh.
probably seeing the fact that the ball was rising and short pitch deliveries, we've got a band right there at the mid-wicket boundary now. So two left-handers opening the innings for Sai Avengers. Same in that direction. That's a good run, good run, good run. You need not always go for boundaries and sixes. Lovely, just the turn of the wrist and a good run there. So Vishal is with me. Vishal, as the match has just now commenced, I know there was a lot of effort by the entire Samiti of Goa, and right from Pavaskar sir to you and all of you to get a ground. This time to the right of the square leg fielder, they've just the one. Could they have hurried and taken two? So the thing I was trying to discuss with you is that tell us something about the efforts that went in to getting such a lovely picturesque ground here in Goa for such an auspicious occasion. Yes, the Sathya Sai National Cricket League is an auspicious occasion on the centenary year of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. ऐसे देखने जाए तो क्योंकि सर ये मेरा बहुत पुराना सपना था कि ये टूर्नामेंट गोवा में हो और Oh, that's the first wicket. That's the first wicket. Must have been the faintest of edges out there. Went for the pull over there on that occasion and must have got just that faintest of tickles of wood. They went up in the peel. We waited for some time. Up went the finger. So that's wicket number one. The first wicket for Sai Avengers. Just when we felt that they're getting some measure of this wicket, suddenly, against a run of play, remember, not a single ball so far beat the bat. The batters seem to be in control. But suddenly, against a run of play, you get a wicket. That's what happens in cricket very often. Just the one delivery is enough to dismiss a batter. So well as Sai Avengers would have wanted a good opening partnership, remember, it's always important to have a very good opening partnership in any format of the game, particularly in T20 format. You don't want to lose too many wickets up front. Yash Gadekar, the batter, out. 3 deliveries faced. Caught by Chandrakant. Bowled by Atul. Scored a single. Four for one, then Sai Avengers. Sanat Nedgi dispatches the very first delivery of extra cover for a 6. What a brilliant start that is. Sanat Nevgi just coming in and making his intentions very clear. He had the wit on that for sure. But having wit is one thing. To go after it very first delivery and hoist it over extra cover, not exactly the place wherein it's easy to score a 6. Scoring a 6 of extra cover is always a challenge. Magnificent start, Sanat Nevgi. Short this time, the other side of the ground. One bounce to mid-wicket boundary for 4. What a start by Sanat over here to his innings. First ball 6, second ball 4. He's making things happen. 2 overs bowled, and suddenly that 6 and 4 have taken the average per over to 7, 14 for 1. Sai Avengers 14 for 1, 2 overs bowled.
That's in the air and that's dropped. Dropped at mid-on and goes down to the long-on boundary for 4. Not the easiest of chances. That must have come rapidly to him. Hit very hard by Rajat Seth. But should have been taken actually, if he judged it early. But hit very, very hard. Some of these catches either stick or they don't. On that occasion it didn't. Rajat will breathe better now. Oh, lovely back foot punch to square cover for 4 more. So the Sai Avengers showing intent now. Sanath seems to have infused tremendous amount of intent there after he came in. A 6 in a boundary and now carrying on the good work is Rajat Seth. 2 boundaries. This one was glorious. Waited for it. Played it late. With an angle bat. Beautifully. Punched it to square third man for 4. That short and that goes to the other part of the ground. That will carry down to the orthodox mid-wicket boundary for 4. A hat-trick of 4s. Let's hear an applause for a hat-trick of 4s. Suddenly the score for Sai Avengers is 26. 26 in 15 deliveries. Sai Avengers have got to move here. That's in the air over the wicket-keeper's head. 4 touches. Fortune favors the brave. Went after it. Not exactly where he wanted it to. Wanted to play it either to square cover or through cover. Top edged over the wicket-keeper's head. Down to the side screen to the right of us for 4. At the end of the day, that's 4 more. 16 runs in this over already. 30 for 1. The score is galloping for Sai Avengers. 4 consecutive boundaries. Sai Ram check. 4 consecutive boundaries. It's again a good ball. This is a good riposte by Kaustubh. The previous delivery was a little bit unlucky. Had that ball ballooned up on the offside, there were 3 fielders in front of the bat inside the 30-yard that went over the wicket-keeper's head. And this took the bottom edge of the bat. On another day, that could have ricocheted onto the stumps. Good riposte by Kaustubh. Good ball again, wrapped on the pads and go across. We'll wait for the umpire signal. Leg byes, as I thought. Yes, leg byes. Ends over number 3. 3 overs bowled. And the score is 31 with that leg bye. 31 for 1 at the end of 3 overs. So Vishal, we were talking about, the efforts that went into getting such a picturesque ground. You can go ahead. जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये सबसे बड़ा मेरा सपना था कि स्वामी के एक बैनर के नीचे अपना एक टूर्नामेंट हो, उसमें सभी अपने खिलाड़ी खेले। तो उसे बहुत सालों की मेहनत के बाद हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने हमें बहुत सा सपोर्ट किया। उसके बाद ये मैच हुई। इस मैच के लिए भी ये मैदान जब ढूंढने निकले थे तो 1 महीने की मेहनत के बाद ये मैदान भगवान ने मिला के दिया कि चलो इस ग्राउंड पे इसको मैच को खिलाया जाए। और एक अच्छी मैच देखने का सौभाग्य यहाँ पर सभी दर्शकों को और हमारे समिति के सभी लोगों को मिल रहा है। इसके लिए हम तहे दिल से स्वामी के ऋणी रहेंगे। Absolutely. I mean, it's Swami's divine blessing that he has given all of us this opportunity to serve him in the Sathya Sai National Cricket League.
bringing the youth of India together. And as our All India President said during the inaugural match last July, hopefully in the coming years we can expand the boundaries and make it a Sathya Sai International Cricket League, bringing the youth of the world together. Hopefully expanded to ladies as well. 3 overs, 31, Sai Avengers. Mithil Karekar, the new bowler. Beats him in the air and off the wicket. Wide declared. Remember, a stumping is valid on a wide. And that's why for a moment there was a around that ground among the fielders. Had it been collected with perfection, was there that possibility? This is good bowling. For a start, don't give the batter any width. Bowl wicket to wicket. Bowl that back of a length. Shorter length and punch through the covers. This carries down to the square cover boundary for 4. He's been very good on the offside, Vishal, Rajat. Particularly, we saw him that extra cover drive, and now we are seeing the square drive. We saw earlier on the steer to third man. क्योंकि सर बचपन से मैं रजत को देखता हूँ, बहुत से मैचेस मैंने रजत के साथ खेली है. इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑफ साइड. अगर ऑफ साइड में थोड़ा सा भी रूम मिले तो उस गेंद को बाउंड्री पार करने से कभी चूके नहीं है रजत. रजत के लिए अगली गेंद उठा के खेलने की कोशिश. सीधे बल्ले से खेली हुई गेंद. गेंद के पीछे खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को रखा. यकीनन एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा रजत को. यहाँ पर बहुत अच्छी सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए मिथिल नजर आ रहे हैं. यहाँ पर रोके रखा है. स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज सनत, जिन्होंने आते ही अपने मंसूबे यकीनन जताए थे. करारे 2 शॉट लगाए थे. टीम का स्कोर बढ़ाने में उन्होंने एक अच्छा योगदान भी दिया था. इस टीम के एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं सनत, जो सामना करेंगे मिथिल की गेंदबाजी का. हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ने की कोशिश, मगर ना कोई रन ना कोई नुकसान. एक अच्छी रणनीति और अच्छी सूझबूझ के साथ इस गेंद को खेला सनत ने. और उतनी अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की मिथिल ने, जिन्होंने एक अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. उठा के खेलने की कोशिश, कट करने की कोशिश. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई तो जरूर थी, मगर उसे रोक नहीं पाए. मगर उसका कोई बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ा. ना कोई रन ना कोई नुकसान. एक अच्छी सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे मिथिल. उठा के खेलने की कोशिश. एक करीबी मामला यकीनन बन सकता था. एक जीवन दान मिलता हुआ यहां पर. उतना ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी काउंटर अटैक. रोकने की कोशिश तो यकीनन करी, मगर वैसे देखे जाओ तो 2 रन तो जरूर बचाए मिथिल ने इस गेंद पर. Ends Mithil's over, and Vishal, I must say that Mithil has bowled a good over. Remember, the previous over went for 16. The one prior to that went for 15 runs. 31 runs prior to the Mithil over. And from the point of view of stemming that run rate, those strokes that were played on either side of the wicket, he's managed to peck back Sai Avengers. 38 for 1 now, Sai Avengers. At the start of the previous over, there were 31. So, really good job by Mithil. And he could have had a wicket of the very last delivery had that cotton bowl stuck. Now cotton bowls are hit with tremendous power, and they either stick or they don't. So often we've seen that. On this occasion it didn't.
So another bowling change from the far end. Deep starting bowling operations from the far end of the ground. Oh, that's lofted hard and high. That's gone miles into the stands for a glorious six. Sanat Nevgi. This is his second six. Tremendous power he's got, Vishal. बहुत ही करारा प्रहार, बल्ले की गर्जन जिस पे लिखे थे रन आधा दर्जन, वो था करारा प्रहार, जाता हुआ सीधा सीमा रेखा पार। जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए मशहूर है ये खिलाड़ी, उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आते ही पहले गेंद को देखा, परखा, जांचा और बहुत ही अच्छा स्वागत किया गेंदबाज का 6 रनों के साथ। वीर तो मिहिर बोलो, दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। बैक टू बैक गेंद हवा में, ऊंचा लगाया हुआ शॉट। वापस फिर से कहना चाहूंगा, बल्ले की गर्जन जिस पे मिलेंगे रन आधा दर्जन। ये बैक टू बैक दूसरा छक्का जाता हुआ सीधा सीमा रेखा पार। बहुत ही काबिल तारीफ और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा करते हुए, बहुत ही खूंखार तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे। यहां पर सनत आते ही उन्होंने अपने मंसूबे जताए थे। पहली गेंद पर एक करारा छक्का जड़ दिया था, उसके बाद उसी नक्शे कदम पर वापस दूसरी ओवर में भी उसी अपने स्पीड को बरकरार रखते हुए बैक टू बैक 2 करारे छक्के लगाने में कामयाब होते हुए सनत। That six also brings up the 50 for Sai Avengers. 50 in no time really. A quick 50. This is a very good power play. So often this is the right thing to do. You've got 2 sixes, take a single, go to the other end, catch your breath. Rajat Sheth might want to join the party. Mihir, of course, will have other ideas. No ball signaled by the umpire. Or he's actually requesting the bowler to wait. So after those 2 sixes, that's a good delivery. This time in the air over the head of the fielder there at mid-wicket. Well carried down to the mid-wicket boundary, the orthodox mid-wicket boundary for 4 more. 2 sixes in the boundary in this over. What a power play Sai Avengers are having here. 1 more ball to go in this over. 55 already. That's well fielded. That was a full-blooded drive straight to the fielder, but he had to judge the bounce and field it, which he did well. Over bowled, 55 for 1. Who's the bowler, please? Atul starts a first over.
Short in length and off his wrist for a single. Atul this time to Rajat Sheth. Short and that's pummeled away past extra cover for 4. What a shot. But that deserved to be hammered. Short in length, outside the off stump, bad delivery. Enough of time to Rajat Sheth. Off the back foot. Literally hammered it through the extra cover boundary for 4. Lovely stroke, and that takes Sai Avengers into their 60s now. 60 for 1. 60 for 1. 4 deliveries in the power play still remain. Short and length, that's once again beautifully played. Beautifully square cut away down to the point boundary for 4. Oh, I love that stroke. That came back here to rock onto that back foot, make room for himself, get right on top of the ball. And how beautifully did he play that? Lovely square cut for 4. 64 now. 3 deliveries in power play still remain. This has been a rollicking power play for Sai Avengers, as they're trying to fetch the ball from outside the boundary. So Vishal, you know a lot about these players. I mean, tell us something about Sai Avengers top order batting. I think they're off to an absolutely magnificent start. 64, 3 deliveries in the power play still remain. जैसे कि देख रहे हैं कि इनकी टॉप ऑर्डर जो है बहुत ही तड़ाकेबाज, मतलब एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से भरी हुई टीम। वैसे देखने जाओ तो दोनों टीम उतनी संतुलित मानी जाएंगी। जो जिस तरीके की अभी गेंदबाजी हो रही है, जब बल्लेबाजी के लिए वो टीम आएगी वो भी उतने ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से भरी हुई टीम। अतुल की गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, यहां पर करीबी मामला हो सकता था मगर गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। आते ही गेंद को देख लिया, भांप लिया इस गेंद को और सीधा भेज दिया 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार। बहुत ही करारा प्रहार निकलता हुआ रजत शेठ के बल्ले से। ऐसे कि दोनों खिलाड़ी एक ही टीम से खेलते हैं। अतुल और रजत जानते हैं एक दूसरे को कि किस तरीके का खेल होने वाला है। इसी के साथ इस शॉट के साथ 70 रन पूरे। फिर से कट की हुई गेंद, करारा प्रहार। गेंद के पीछे खिलाड़ी, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर, मगर बहुत ही अच्छी सूझबूझ और रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी एक बड़ा शॉट लेने के बाद उतनी अच्छी सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, स्ट्राइक पर वापस आमंत्रित किया यहां पर सनत को। और सनत भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं क्योंकि सर जिस तरीके की उनकी एग्रेशन है, उन्हें उसी एग्रेशन को ही भाती है। जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते मैंने देखा है उन्हें, तो आते ही वो पहले मन बना के मैदान में उतरते कि आते उनको अपना रोल निभाना है। Last ball of power play coming up. That's what Sanath is known for. That's what Vishal was telling you. That's over mid wicket. Grand 6. The ball is out of play. Ball is out of the ground. What a magnificent shot. 6 number 4. Make that 6 number 4 for Sanath. Power play ends. And the score for Sai Avengers 77. 77 for 1 in the power play. So the replacement ball is being taken inside. The umpires will have a look at it. And the last over of power play, 22 runs. They took full toll of the last over from Atul. 2 fours, 2 sixes, and 2 singles. 22 runs in the last over of power play.
77 in power play. This has been a rollicking power play for Sai Avengers. Exactly the kind of power play they must have wanted. And this has also given the players a chance to have some water, a small break, because the ball went out of play. How hard that was hit by Sanath. Sanath 1-6 over extra cover. That's the way he started, in an aggressive manner. And 3 sixes over mid-wicket. So after that small break, the ball has been replaced now. लक्ष्मण ये बॉलर कौन है ये इनका एक बैटिंग साइड का है सर दूसरा दिया ही नहीं Hitesh Talwar will start a fresh over from the far end. Well tossed up, that's down to long on. Just a single. Didn't quite get it from the meat of his blade. On that occasion did Rajat. Was aiming for another over boundary over long on. Hitesh also not giving the ball too much of pace. Slower through the air. But this has been an excellent start. Excellent start for Sai Avengers. Into the covers here, 2 good deliveries, decent deliveries. But remember, 6 deliveries make an over. Can he keep it tight in this over? That's through the covers, gloriously struck, will not be cut off. And that goes through to the extra cover boundary for 4. Short in length, outside the off stump. Rocked onto that back foot. Did Sanath. And punched it. Lovely punch, timed to perfection. The ball gained momentum on the turf as it rapidly sped to the boundary for 4. 81 for 1. 82, I beg your pardon. 82 for 1. Shot है, back to back. Lovely. Will that be cut off? Yes, it is cut off. Inside the extra cover boundary. This was not paid with the same kind of power as the earlier one was. The fielder there could cover ground, Kaustup, and complete the fielding. Decent over in comparison to what we've seen. Some of the overs in the power play. 22 in the last over prior to power play. Good ball. That's the length to bowl. Now if he continues bowling like that, he'll force the batters to play defensively or use their feet and take a chance against him. Short in length and will be cut off by the sweeper cover. Good over. Good first over there by Hitesh.
Just 6 runs in Hitesh's first over. They need a few more. They need a few more of them to peg back Sai Avengers, who are on a roll right now. 83 at the end of 7 overs. Almost 12 runs to the over so far. So something needs to be done here to put on the brakes, as we see a lot of readjustments being made. Mithil to start his second over. That's a pickup shot, goes straight to that fielder at orthodox wicket. 5 feet here or there would have been a boundary. Field is spread out, remember. In the power play, they were hitting over the top and getting the boundaries. Now there are boundary riders across. There's one to the left of us at the extra cover boundary. There's one right on the long leg boundary. There's one on the square leg boundary. And there's one at wide long on. So 3 boundaries on the onside covered. It's a good length to bowl. Good length to bowl. Good run also. Good cricket all round. Good delivery, played with soft hands, good calling, good response, quick run. For Rajat also, we've got a man right on the square leg boundary and a man right on the mid wicket boundary, a man on the long on boundary. Should be off the pads, was it? Will be cut off. We'll wait and watch. Oh, he got it inside out onto that. Interesting. Went for the big hike. Didn't quite connect and got an inside edge. Moment Sanath comes in. All those fielders at the onside drop right to the boundary. That's again a good ball. Very good delivery. This is good bowling. Good length, good line, ball wicket to wicket. Also, this one, he didn't give the ball too much air. Pushed it faster. Made the batter hurry through with his stroke. Oh, that's just eluded the outstretched palm of the bowler. Oh, good stop, good stop. This is good fielding. Lovely fielding. On-brushing fielder Hitesh from wide long on. Prevents what could have been a boundary to just a single. 3 runs saved over there. Excellent fielding. Oh, that second taken. Oh, that's a good catch. For a moment we thought that'll go over for 6, but beautifully taken. Right at the square leg boundary. We said there were 5 boundary riders, and one of them came into play, judged it and took it beautifully. And for once, I must say, Rajat picked on the fielder spot on. Rajat, after a fantastic innings, 47, played beautifully. Makes his way back to the pavilion. The partnership is broken, more importantly. $88 for 2. That was an excellent partnership. Rajat, just 3 short of his 50, deserves an applause.
Rajat certainly deserves an applause. So Rajat must be a little bit disappointed on the verge of what could have been a brilliant 50. Dismiss for 47. $88 for 2. Just when things were going completely out of hand. They've managed to get a wicket here. First ball of a fresh over from Hitesh. Sanat Nevgi has played brilliantly so far. That's once again in the air. He's found the gap, as he has. He's found the gap, bisected those two fielders down to the mid-wicket boundary for 4. कितना? That's a good ball. That's a good ball. Can they bowl more in that area? What will happen if they bowl more in that area is that's lofted hard and high. The man there at mid-wicket can only see it sailing over his head for another 6. Oh, he's not only hitting sixes, Sanat, but hitting huge sixes. Monstrous ones that went about 6 rows into the stands under construction to the left of us. Big 6. They know he's hitting sixes in that area, mid-wicket to mid-on. Sanat on 49. 1 short of his 50. That's in the air, a little bit uppish, but that gets his 50. Brilliant half century here by Sanat Nevgi. 50 not out he is. We've seen some brilliant 6 hitting from him. Acknowledges the ovation from his teammates in the dugout. 50 runs of just 31 deliveries. Tells you the story. Navdeep wrapped on the pad to go up in appeal. Umpires unconvinced. He says, that's the over, my friend. Over bowled. But a good question to ask to a new batter there. Ball keeping low also for the first time on that occasion.
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा, सनत के बल्ले से आग उगलते हुए करारे शॉट निकले। बहुत ही एक अच्छी पारी इन्होंने बिल्ड की अपनी टीम के लिए। ना इन्होंने सूरत देखी ना मूरत देखी, तो सनत ने अपने टीम की जरूरत देखी और उस जरूरत के हिसाब से अपने आप को घोलते हुए फिर से उठा के खेलने की कोशिश। उतनी अच्छी फील्डिंग, मगर एक रन लेने से नहीं रोक पाए सनत को। बहुत ही धीरे धीरे मगर तेजी से रन गति को बढ़ाने में कामयाब होते हुए सनत, और उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइकर पर नवदीप। इसी के साथ इस टीम के 100 रन पूरे। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे खेलने की कोशिश, छोटी सी अपील तो यकीनन करी थी गेंदबाज ने, मगर अंपायरों पे उसका कोई असर ना होते हुए एक अच्छी सूझबूझ भरी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभी भी चलता हुआ 10वां ओवर प्रगति पथ पर, और 100 रन पूरे। रक्षात्मक तरीके से उसे खेला है। 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन पूरे हो चुके हैं। साई एवेंजर्स नॉर्थ गोवा की टीम की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम यकीनन बहुत ही खूबी से निभाया। हल्के हाथों से खेल दिया, कवर्स की दिशा में 1 रन चुराया, वापस स्ट्राइक पर लाए सनत को। बहुत ही, अब तक तो सभी दर्शकों ने यह भी देखा था कि बहुत ही बेरहमी से कूदते हुए नजर आते हैं सनत। जिस तरीके का उनका फ्लो और बल्ला चलता है, यकीनन आग उगलता हुआ बल्ला। सामने खड़े गेंदबाज हितेश मिथिल की अगली गेंद का सामना करने के लिए उठा के खेली हुई गेंद, गेंद के पीछे खिलाड़ी, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही शानदार तरीके से उस गेंद को रोका कौस्तुभ ने, और 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे मगर तेजी से बढ़ता हुआ 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, के हाथों से कलाइयों के सहारे वापस खेलने की कोशिश, मगर बांध के रखा था। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 10 स्कोर जा पहुंचा है 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी स्ट्राइक पर सनत खड़े हैं। 102 for 2 of 10 overs. So very, very good going for Sai Avengers. But Sai Coastal Fighters certainly showed some fight when they came back. Got the second wicket of Rajat Seth. The score at that time was 88. These two have added 14 more to the total and taken it to 102 now. Outside edge, will it be cut off? Should be. They should get a couple for that. Realizing that there's no man at the extra cover boundary, Sanat wanted to take that route. Got the thick outside edge for a couple. That's a good ball. Draws the batter forward. Remember, Sai Avengers at one stage were going close to 12 and over. Now they are a touch over 10 and over, which means that the
Sai Coastal Fighters have pulled them back. This will be a good wicket to bat on when Coastal Fighters come in. Again, a good ball. This is a good over so far. This is a very good over. Hitesh into his third over. He's bowled well. All his 3 overs. In comparison to the other bowlers, he's been frugal. Once again, a good ball. What he's doing over here is varying the trajectory of his delivery. Couple of them a little bit tossed up, couple of them back of a length, faster through the air. The odd ball slower through the air. That was the one which is given a little more air, drove the batter forward. But exact length, that length where the batter can't take too many liberties. One more good over. Ends from Hitesh. From your experience of what's been played so far on this ground, what do you think is a par total? What do you think will be really competitive total? जिस तरीके की बल्लेबाजी सनत खड़े स्ट्राइक पर, वो देखते हुए अगर इसी नक्शे कदम पर ये खिलाड़ी चलता रहा तो यकीनन 200 के ऊपर का पल्ला पार करने में कुछ ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी। मगर आते ही उन्होंने मंसूबे भी जताए थे। नया ग्राउंड था, हरा भरा ग्राउंड, उतनी अच्छी बैटिंग कंडीशन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए सनत यहाँ पर। बहुत ही अच्छी काबिलियत और तालमेल, सूझबूझ, रणनीति सभी का इस्तेमाल करते हुए और अपने निजी 72 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सनद, और टोटल जो टीम का स्कोर हुआ है वो 132, 132 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 72 over 132. That tells you that he's done bulk of the scoring here, Sanat. Some very big hitting. 5 sixes over mid-wicket. Started off with a 6 of extra cover. All of them extremely powerful hits. Kaustub, it'll be to continue bowling operations. This will be his third over. Oh, he's pulled him around the corner. It will be cut off. Just a single.
132 of 13 overs means they've once again gone beyond 10 runs and over. They were pulled back to around 9.5. So the last over was very productive. Brings that man, Sanath Nevgi, on strike again. 72 he is. As a good look around the field. Where are the boundary riders? There's one on the mid-wicket boundary. There's one just inside the long-on boundary. There's a man at the extra cover boundary. There's a man just in front of us on the long-off boundary. And there's also a man on the long leg boundary. So 3 boundary riders on the on-side, 2 on the off. That's a good ball. That's a good ball. Yorker length almost. But the issue is, can he bowl that more consistently? He also seems to have fallen down. Hope there's nothing serious. As he attempted that Yorker, guess he slipped a little bit. Kaustubh. Little bit of a hobble. Kaustubh it is who started bowling operations over here today. His first over, just a single. In contrast, his second over went for 16. 4 consecutive boundaries. And his third over in progress now. Started well, just 2 singles. Once again, a good ball. Should be just a single. I think what Vishal, I guess the 2 batters have decided is Sanath will do all the big hitting, and Navdeep will try and play around him. Not a bad strategy, actually. फुल टॉस गेंद उतनी ही करारी प्रहार करने की कोशिश, मगर देखना यहाँ पर थोड़ी सी तालमेल की कमी, मगर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक पर लाए वापस दीप को। शायद कुछ डिसीजन की आशा थी यहाँ पर, सनत को चाहते थे कुछ डिसीजन मिले, मगर उसमें थोड़ी सी तालमेल की कमी। स्ट्राइक पर आया है बल्लेबाज नवदीप, जो सामना करेंगे कौस्तुभ की गेंदबाजी का। अब तक कौस्तुभ ने बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी का नजारा, सटीक लाइन लेंथ, हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ने की कोशिश तो यकीनन करी थी। 1 रन चुराया और इसी के साथ लेग बाइट्स का इशारा अंपायर की तरफ से, और स्ट्राइक पर वापस लाए उस ताबड़तोड़ बल्लेबाज सनत को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, शानदार, और जहां पर टीम को जरूरत थी उस टाइम उन्होंने अपने आप को गियर अप किया और बहुत ही करारे शॉट लगाए अपनी टीम के लिए। यकीनन अपने बल्ले का पावर और छक्कों का शावर दर्शकों को देखने मिला इनके बल्ले से निकलते हुआ। छोटी गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, मगर कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। बल्ले का पावर दिखाते हुए रनों का शावर बनाने की कोशिश करते हुए सनद यहां पर करारा प्रहार जाता हुआ सीधा 6 रनों के लिए। और यहां पर मौजूद सभी दर्शकों से तहे दिल से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हर एक खिलाड़ी और हर एक कलाकार भूखा होता है तालियों को। अगर वो एक छोटा सा या बड़ा शॉट लगाए तो कृपया अपने हाथों से तालियां बजाकर उस खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाए। And Vishal, you've yourself played the game, and we have all played this game. That stroke wasn't an easy stroke to play. He actually flat batted it to the side screen to the right of us, over the bowler's head, flat batted, using the pace of the bowler. Absolutely incredible shot. And that calls for a lot of power, tremendous power. That's what this man has got. Sanath Nevgi.
requesting the fielding team and the fielding captain. Fielding team and fielding captain, please ensure you take only 1 minute between overs. If somebody is hurt, he needs to come out. These are ICC rules. That's what we are following in the Sathya National Cricket League. Requesting fielding team and fielding captain, unless it's a break called for by the umpires, 1 minute between the overs. "14 overs bowled, 143, so over 10 runs and over." अभिजीत ये बॉलर कौन है? बॉलर बॉलर नया बॉलर है। बॉलर कौन है? Atharva, the new bowler. Uses his feet, will get just the one. And this is what happens when you don't give pace on the ball. The batsman needs to generate his pace, generate his power. But now Atharva has different challenges with Sanath in front of him. Sanath has extraordinary power. Doesn't really need pace on the ball to talk it out. He's got power himself. This will be a good contest. 3 good deliveries from Atharva so far. How does he bowl to Sanath? Short in length, and that's taken. Oh, he's dropped him. He's dropped him. Tell you what. He did everything except hold the ball. It went straight down his throat. Positioned himself well. The ball went into his palm. And it popped out. That would have been a huge, huge wicket. That would have pegged back Sai Avengers significantly, because remember, if Sanath stays there, he'll end the innings with a flourish. And that was Sanath's catch. क्योंकि सर यकीनन बड़ी मछली फांसने के लिए जाल तो यकीनन बिछाया था गेंदबाज ने, मगर फटे हुए जाल के वजह से मिलता हुआ एक बहुत बड़ा जीवन दान है। ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज को अगर जीवन दान मिले तो यहां पर बहुत ही बेरहमी से पेश आते हुए ये खिलाड़ी, देखना यह है कि अब तक तो मैंने जैसे देखा है कि बहुत ही बेरहमी से पेश आया और गेंदबाज की भावना से खेलते हुए नजर आ रहे यहां पर सनत। That's a good ball again. Good ball. This is a good over. He had a drop catch. He's even held Sanath in check. Another 5 overs to go after this. The captain will be tempted to give at least a couple of more overs to Atharva. He's bowled well. But 1 more delivery left. 6 deliveries make an over. Well tossed up. Thick outside edge over there. They take one, they think of a second, which is not there. Good over. Good over in the context of the game from Atharva. Just 7 runs coming of that. 15 overs bowled, 150. And just for your information, Sanath Nevgi is on 84 of just 35 deliveries. 84 of 35 deliveries. Well, as we talk about his batting, let's also have a word of praise for the way in which Atharva bowled the last over. And I must say, overall, Hitesh has bowled very well. In his 3 overs, he's conceded just 2 boundaries. So Hitesh also bowling very, very well.
A run of the reverse delivery from V is over. Somebody adjustments being made. I'm sure we'll have all boundaries plugged over here. In the air, Kaustubh is getting under it. This time, no mistake. This time, no mistake. Very well taken. But a very, very, very good innings from Sanath. Nevgi comes to an end. Excellent display of batsmanship. Sixes and floors all round the ground. Extra cover, mid-wicket. Long on over the bowler's head. वन 151 for 3. 15 overs bowled. Good ball, good ball. It'll be interesting to see how much they can stretch the total over here. दोस्तों बैट्समैन कौन रे Having lost Sanath, बैट्समैन कौन Deep, the new batter, opens his account with a single. "28 deliveries after this one. Can they stretch it to 200? Yes, no situation. There was a single there. There was a single there for sure. When it goes behind the bowler, it's a striker's call. And the non-striker's response. This time they do it well. This time it's a non-striker's call and they go across for a single. That's good understanding between the wickets. Leg byes. "153, just the 3 singles. The last 3 deliveries of that over. So once again, the average dipping below 10 and over.
Goes back to 9.5. That's what wickets can do. And that's what a big wicket can do. Sanath was a big wicket. Readjustments being made in the field. Atharva, who set down an excellent over, conceding just 7 runs. Expectedly being given another over. Well tossed up. This time he's hit it over the covers. Down to the cover boundary for 4. Some discussions over there, some discussion over there. We should have had that boundary plugged. Sanath is back. That doesn't mean you don't have a boundary rider there. What happened is moment Sanath left, instead of 5 boundaries, only 3 of them were plugged. And that left that cover boundary open. In the air, Kaustubh is getting under it. All that he can do is see it sail over his head. We'll wait for the umpire's signal. 6 runs. They've started this over well, very well. I said the run rate went down to 9.5. What a way to start the over for Sai Avengers. A boundary and a 6. Exactly what they wanted. In the air again, this time Kaustubh is getting under it. That's over the bowler's head. And he's taken it. Took it beautifully. Rolled over. Held that ball beautifully. Did Kaustubh again. He's taken 2 now. 1 off Sanath, and just after Sanath left, when Navdeep was beginning to open up, in the air, taken. What a lovely catch that is. Superb catch. Dive forward. Full marks to Atharva. Held that ball back. Gave that loop, that enticing loop. But it's that length that completely foxed the batter. And what a catch there at short cover. Fantastic cricket all around. बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा विकेट चलता किया। यहां पर वापस जाना पड़ेगा नितिन को। इन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला और गोल्डन डक वापस
शानदार सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए वीर यहां पर। और अगले बल्लेबाज जो आए बल्लेबाजी के लिए सुबोध नाइक। इस विकेट के बाद 6 विकेट का पतन और 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर अभी भी रुका हुआ 165। Round the corner, carries down to the boundary, wides, 4 wides. That's exactly what I was waiting to see the signal. These are costly runs. Sai Coastal Fighters have shown the fight. They've come back into this game. You can't afford to give these freebies. You've taken wickets. You're trying to keep them under 200 and you give these freebies. Elect by signal. Now there's a breeze across the ground. Remember, not very often you get such a breeze in the afternoon. Goes for the slog sweep again. Wide signal again. Oh, that's a stumping opportunity. Stumping opportunity there. It's all happening in this over. Wides being conceded. Stumping opportunity missed. How costly will this be for the Sai Coastal Fighters? Opportunity is being missed here, Vishal. Wides being conceded. Opportunity is being missed. बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी यकीनन थी, मगर वो एक अच्छा चांस मिस कर गए यहां पर विकेट कीपर। आने वाली गेंदें ये साबित, ये तो निर्णायक रहेंगी आने वाली गेंदें जितनी कि जितना ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाए अपने टीम के लिए, ये बहुत ही अहम भूमिका रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, स्ट्राइक पर वापस लाए हैं सुबोध को। सुबोध भी एक दाएं हाथ के खिलाड़ी। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति और 18 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है बॉलर नेम सर हितेश। लास्ट ओवर सर। Hitesh has one more over to go in the score of 4. 81-85. Had that stumping been taken, wides not been conceded. Now 14 runs.
where I must say one thing. Sai Coastal Riders have done well to peg it back in the last few overs. उठा के खेली हुई गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी। देखना यह है कि एक आसान सा कैच और वापस जाना पड़ेगा। दीप को यहां पर चलता किया है। दीप को हितेश ने बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई थी गेंद को, और एक अच्छा विकेट यहां पर वापस भेजा है। हितेश ने एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाया। यहां पर एक स्लॉग और चलती हुई और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज वापस अपने खेमे में। बहुत अच्छी कैच और उठा के खेलने की कोशिश, बीट होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रीतम ने आते ही उठा के खेलने की कोशिश तो करी थी, मगर दूसरी गेंद थोड़ी सी टाइमिंग में चूक है और एक रन लेने से नहीं चूक पाए अपने आप को, और इसी के साथ प्रीतम ने अपना खाता खोला। स्कोर धीरे धीरे मगर तेजी से बढ़ता हुआ 174। इस ओवर की आखिरी गेंद सुबोध के लिए। उठा के खेली हुई सुबोध ने गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक रन चुराया। दूसरे की मांग हो सकती थी मगर रोक के रखा अपने आप को, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति 19 ओवर की समाप्ति के बाद 10 स्कोर जा पहुंचा है 175, 175 रन। ये आखिरी ओवर और निर्णायक ओवर रहेगी। स्ट्राइक पर खड़े सुबोध, क्या लगता है के सर की 175 का पल्ला अभी तक तो इन्होंने बहुत ही आसानी से पार कर लिया है, बची हुई एक और आखिरी और निर्णायक रहेगी। आपको क्या लगता है कि टोटल कहां तक आ सकता है इस इनिंग का? You know, at one point in time, I thought, they'll definitely cross 200, probably 210. They started off at 12 and over. You can never sustain that. That's very difficult to sustain. Not often does one sustain that, but even then, even if it drops, I thought probably somewhere around 10 and over. 200. Now this is below 9 runs to the over. Coastal Riders, Sai Coastal Riders, if they can concede under 5 in this last over, they'll keep it to under 180. That's in the air. Kaustup has got a good pair of hands, but falls well short of him. Well short of him. Just the 1 run. Good run, good run. This is leg buys. In the air. Oh, what a catch! What a catch! How well did he balance himself? Magnificent catch. Brilliant. Kaustup has really taken 2 catches prior to this one. This was excellent by him. Kept his eyes on the ball, must have covered about 15 feet, ran at full pace, judged it to perfection, took it, bounced off, but how well did he balance that?
finally kept his eyes on the ball and took it one-handed. Absolutely brilliant, Vishal. पूरी मैच में अब तक बहुत ही अच्छी कैचेस पकड़ी है कौस्तुभ ने। तारीफ करनी पड़ेगी उस खिलाड़ी की, कितनी लंबी कैच हो मगर उन्होंने आखिर तक उसका पीछा किया, कैच को पकड़ा और सफलता दी अपनी टीम को। कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने बल्लेबाजों को कि अगर कैच आए और उसे कोई जीवन दान मिले। वीरू की अगली गेंद उठा के खेलने की कोशिश, लॉफ्टेड शॉट, एक रन चुराया। दूसरे की मांग हो सकती, दूसरे के लिए दौड़ना तो यकीनन चाहते थे मगर उतनी अच्छी थ्रो और विकेट कीपर के हाथों में गेंद। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। I must say the wheels have come off Sai Avengers towards the end. They've not been able to finish with the flourish that they wanted, but full credit to Sai Coastal Riders. It's a good ball again, good ball. Fair amount of turn on that one. You don't expect too much when you have the lower order batters. Will they take a one of that? They don't. There's a run out, easy run out at the non-striker's end. That ends the innings for Sai Avengers. 178 is what finally Sai Avengers are on board. Sai Coastal Riders will chase 179 to win. Vishal, what's your take? Is this a competitive total? Is this below par on this wicket? What's your take on that?
Sai Ram, and welcome back to the Sai Coastal Fighters chase. Veer and Atul Fatte, the two opening batters for Sai Coastal Fighters. Wrapped on the pads, go up in appeal, first ball. Rajat Sheth opened the batting for Sai Avengers, is opening the bowling as well. Veer Yadav on strike. Short and length, that's been pummeled away. That should go down to the orthodox mid-wicket boundary for the first boundary. Dibbly-dobbly medium pace of Rajat Sheth. Short in length. At that pace, if you're going to pitch short, you're going to get hammered. And that's exactly what happened. Veer helps himself to 4 runs and gets the Coastal Fighters on the way to their chase. Remember, the target is 179 in 20 overs. Ball retrieved now. There's a man at third man, and there's a man right on the backfoot point boundary. The two boundary riders, both of them on the offside. So very clearly it will be an off stump attack on the off stump or around the off stump. That's a good ball, good ball. Pacey delivery. Just when I said seems to be some little bit of a dibbly-dobbly medium pace, he says, no, I can bowl fast as well. That was much faster than the first two deliveries of this over. Nippy off the wicket, gained height and momentum. The first few overs, Vishal, and the power play will be very important in this chase. अच्छा काउंटर अटैक, बहुत ही शानदार तरीके से कवर ड्राइव करी, गेंद को 1 रन चुराए, स्ट्राइक पर लाया अतुल को। जिस तरीके की पहले इनिंग में पावर प्ले हुई थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, सनत ने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी, उसी पारी की जरूरत होगी इस मैच को, इस इनिंग को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर अतुल खड़े, एक ताबड़तोड़ और अटैकिंग बल्लेबाज माने जाते हैं। ये बहुत सी बड़ी इनिंग, बहुत सी अच्छी पारियां इनकी मैंने खुद देखी है, मैं उसका एक साक्षीदार हूं कि इन्होंने अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और देखना यह कि रजत की गेंदबाजी को कितने अच्छी तरीके से खेल पाएंगे अतुल। पहली गेंद बहुत ही रक्षात्मक तरीके से गेंद को रोका, उतनी अच्छी गेंद, उतना अच्छा सम्मान दिया उस गेंद को। यकीनन बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी बना के मैदान में उतरे हैं, जानते हैं अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी बहुत अहम भूमिका रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों की, दोनों ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर उतनी जिम्मेदारी भरी पारी खेलने की। बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ मैदान में उतरे हुए दोनों खिलाड़ी। उठा के खेलने की कोशिश, बाहर की गेंद के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश, मगर उतना उम्दा और उतना फायदा नहीं उठा पाए। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। उस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शानदार हवा चलती हुई मैदान में, गर्मी भी उतनी है। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पर आपको धूप ज़्यादा लगे तो अपनी जगह पर बैठिए। आपके लिए पीछे जलपान का प्रबंध किया गया है, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आपको मिल सकती है, बहुत अच्छे वाटरमेलन रखे गए हैं। हमारे स्कोरर जी भी बहुत ही प्यासे नजर आ रहे थे, जिन्होंने अभी अभी पानी का स्वाद लिया है, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे मैदान पर। हमारे
सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही फेयर स्कोरर माने जाते हैं। अमित न्यूपानी जी, सभी के दिलों पर राज करने वाले ये एक खिलाड़ी, अपने मैंने उनकी बहुत सी गेम्स देखी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते थे। पहली गेंद उठा के खेलने की कोशिश, गेंद फील्डर के हाथों में करीबी मामला हो सकता था। बहुत अच्छी ड्राइव, एक रन तो चुराए, दूसरे की मांग हो सकती थी, दूसरे के लिए बहुत ही आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। Rahul shares the new ball. Should be called a wide. It is a good take by the wicketkeeper. Not the easiest of takes. Goes down the leg side, but that was a good take. Otherwise, that was certainly 4 wides. That's over the infield on the onside for 4. Veer showing his Veerta over here. It started off very well, 2 boundaries to his name. That's exactly what Sai Coastal Fighters need over here. They need a very good start in the power play. 179 is a very good total. 9 runs and over is the asking rate. That's over the bowler's head. What a spanking drive that! From the meat of the blade. Brilliant, brilliant. Loftus took over the bowler's head for 4. All that the umpire and Rahul could do is heave away from the ball. Hit powerfully, very, very powerfully. He's got a lot of power for sure, Veer. Tremendous power was packed into that lofted drive over the bowler. This time goes for the pull, but the ball doesn't rise up as much as he expected. Wrapped him on the pads, going down the leg side. There's a fielder at sweeper cover. There's a man right on the 3rd man boundary. The 2 boundary riders in power play. Good fielding. Excellent fielding. All this will matter, remember. The runs saved, be it 1s or 2s, all this will add up. Oh, lovely drive. Will it be cut off by the sweeper cover? It will be. Oh, misfield! He tries to pull it back. Has he pulled it back or did it go for the boundary? Umpire will check. Umpire will check. Did you pull it back or is it a boundary? Yes, that's a sportsman spirit.
That's the Sai love with which we play this game. He says, no, I didn't pull it back. 4 runs. So 3 boundaries to the Sai Coastal Fighters batters in that over. 2 overs bowled. 20 for no loss. Good start. Good start here, Vishal. बहुत ही शानदार शुरुआत, वीर के बल्ले से निकलने वाले करारे प्रहार, गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद सीधा सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। और बहुत अच्छी शुरुआत, दोनों बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं कि उनका आज रोल कितना अहम रहने वाला इस मैच में। अगर इस मैच को जीतना है तो 178 का पीछा करते हुए मैदान में उतरी हुई ये बल्लेबाजों का जोड़ा। उठा के खेली हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी देखना, ये करीबी मामला हो सकता था, मगर लगता हुआ पहला झटका, बहुत बड़ी मछली फांसने में कामयाब होते हुए रजत, और उन्होंने चलता किया है अतुल फट्टे को। वापस जाना पड़ेगा उनको अपने खेमे में, और मिलती हुई पहली सफलता, बहुत बड़ा विकेट। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी, मगर अतुल को वापस जाना पड़ेगा अपने खेमे में। और रजत और अतुल ऐसे देखे जाए तो दोनों एक ही टीम में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने एक ही टीम के साथ खेली, जानते हैं उनकी कमजोरियों को, जानते थे रजत। उसी तरीके से उन्होंने उनको गेंदबाजी फंसाया, बहुत अच्छा जाल बिछाया था रजत ने अतुल के लिए। वापस भेजा उन्हें अपने खेमे में, और एक सफलता अपनी टीम के लिए, एक कप्तानी पारी करते हुए रजत यहां पर। अगले बल्लेबाज जो आए मैदान में, कौन है यार, बॉलर बैट्समैन का नाम ही पता नहीं यार, कौन है अगला? आयुष वेल्लेकर आई थिंक। वो डॉक्टर आयुष ही है वो। बैट्समैन दोतर आयुष मरे। अगले बल्लेबाज आयुष आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, और अभी एक अहम भूमि का निभानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। एक अच्छी इनिंग बिल्ड करनी होगी, यहां से एक साझेदारी होनी बहुत जरूरी होगी इस मैच में। एक बड़ा, वैसे देखे जाओ तो T20 मैचेस में ये बड़ा स्कोर नहीं माना जाता, मगर एक अच्छी साझेदारी की जरूरत। पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया उसे, 1 रन के लिए 1 रन चुराया, और इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Important wicket that of Atul Farte there. No ball called. This could be a very important delivery. Having lost a wicket, there should be a free hit. There you are, umpire indicating free hit. Veer is on strike. He's got 4 boundaries already, and this is a free hit. He's got nothing to lose over here. He can throw the kitchen sink at this one. That's what he does. 1 bounce to the square, third man boundary for 4. This is a very interesting start here. They've got the runs on the board. They've also lost a wicket. The next 3 or 4 overs going to be very, very vital. Over number 3 in progress. So the 2 boundary riders now are right, one on the point boundary and the other one at third man. A little bit squarish.
Whipped away. That's second. They go up in appeal. Umpires unmoved. Umpires unmoved. They go right up to the umpire. Umpire is very clear that there was no wood onto that. In his opinion, it was off pad. And he says, compose yourself, guys. Compose yourself. Was that off thigh pad? Umpire was very clear right from the time they went up in appeal. He was so sure there was no wood onto that. What a start here. Tremendous energy all around. Expectation every delivery. Well, that's beautifully played. A lovely square drive for 4. Adding insult to injury over there. They go up in appeal and the next delivery. Square driven for 4. Sai Coastal Fighters up to 31. One more delivery left in the third over. Make that 32 at the end of 3 overs. 3 overs or one more delivery left? Probably one more delivery left. Okay. We thought probably 6 were on, but one more delivery left, which means they are already over 10 and over. And the man who's been on the rampage is Veer. 6 fours already to Veer. That's a good run. That's a lovely run. Play with soft hands. Go across to the other end. Three overs bowled, 33 for 1. और हमारे सभी के दिलों में राज करने वाले नारायण भाई आज मैदान में अभी उपस्थित हुए हैं। कल एक छोटा सा हादसा उनके साथ हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, मगर हम सभी के शेर आज मैदान पर उपस्थित। मैंने उनको बुलाया था कि आपको मैदान पे आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी होगी, और नारायण मेरे बात का थोड़ा सा सम्मान करते हुए आज मैदान पर खड़े। कल कहीं गए थे तो उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। हमारे शेर को एक छोटे से कुत्ते ने काट लिया था, मगर उस बात को नजरअंदाज करते हुए आज मैदान पर खड़े नारायण भाई, और उनके लिए सभी दर्शकों से कहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां। Our brother Vishal in his element there, as these two batters are in their element. 34 for just 1. Fourth over just started. Rahul into second over. Oh, lovely punch through the covers for 4. What a lovely shot. The extra cover drive is always a magnificent stroke in cricket. Short in length, outside the off stump. The back foot punch through extra cover for 4. What a start here, Vishal. Brilliant, brilliant start. Good contest this between bat and ball. White declared.
There was no real conviction in that appeal. This is modern day cricket. Sometimes to distract the umpire, they go up in appeal, but the umpire over here, very clear in his mind, declaring a wide. That's over the top. One bounce to long off for 4. These are some fireworks by the Sai Coastal Fighters. Veer, showing all his veerta there. 8 fours already for Veer. Ayush, on the other hand, doing the right thing after the fall of an early wicket, giving as much of strike possible to Veer. That's taken. Oh, that's dropped. That's dropped. How important will that catch be? There's a possibility of a run out, but no harm done. Time will tell. Time will tell how important will that catch be. ये बहुत बड़ी मछली फांसने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जाल तो यकीनन बिछाया था, मगर फटे हुए जाल की वजह से मिलता हुआ एक बहुत बड़ा जीवन दान यहां पर वीर जैसे बल्लेबाज को, जहां पर रनों का पहाड़ हो, वहां पर वीर के बल्ले का दहाड़ हो। जानते हैं अपनी खूबियों को और अपनी जिम्मेदारियों को। ठाके खेली हुई गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और ये यहां पर फिर से मिलता हुआ बैक टू बैक, हर एक खिलाड़ी को एक जीवन दान मिलता हुआ। ऐसे T20 के मैचेस में ये कैच छोड़ना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। हालांकि जहां पे आप एक सेट बैट्समैन खड़ा हो के सर, और आप उसके कैच गिरा रहे हो, वापस उन्हें बार बार मौके दे रहे हो, तो एक थोड़ा सा ये मतलब एक इनका कमजोरी माना जाएगा इस इनिंग के लिए। He's bisected that gap. That's 4 to mid wicket. I said earlier, add insult to injury. Had those 2 catches been taken, it would have been 3 down. On the contrary, you've conceded a boundary. Good over by Rahul. 2 catches dropped off him, particularly the second one. Should have been taken. The first came at tremendous pace, tremendous power. Two dropped catches in that over. 4 overs bowled. 4 overs bowled, 49 for 1. Tremendous start. Remember, this is the way Sai Avengers also started. Over 12 runs and over. And then Sai Coastal Fighters pulled it back. And in the end, they ended up with 178, under 9 and over. It's time now for the Avengers to do something similar. The Coastal Fighters, pull them back. Otherwise, they will run away wicket. Hold your catches, most importantly. बट वो क्या है उधर, क्या है उसको किधर क्या करना पड़ा, वो पकड़ना ही है, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये भी इसने हाथ में निकाला, वही बोला ये डिफिकल्ट। बॉलर कौन? Deep is the new bowler from the far end to Ayush. Remember, Ayush dropped in the last over. This time high up in the air again. This will go in no man's land, over boundary. 6 runs. Just over the boundary. At long leg for 6. Slog swept beautifully for 6. Runs coming thick and fast. First 6 of the Sai Coastal Fighters innings. They're scoring at over 12 and over, which means they've played some wonderful boundaries. 50 हो गया। That's a reverse sweep, doesn't quite time it. We'll get a run nonetheless.
Incidentally, that 6, that slog swept 6, brought up the 50 for Sai Coastal Fighters, who are now 57 for 1. स्ट्राइक पर अभी भी वीर खड़े हैं। पिछली ओवर में इस इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया था, बहुत ही शानदार शॉट था वो इनके बल्ले से निकलने वाला। वीर के लिए गेंदबाज दीप की हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री की लाइन के उसके पीछे दौड़ते हुए खिलाड़ी 1 रन चुराए, दूसरे की मांग हो सकती है, बहुत आसानी के साथ 2 रन चुराने में कामयाब होते हुए। बहुत ही शानदार रणनीति, बहुत अच्छी सूझबूझ। पिछली ओवर में एक बड़ा शॉट लगाया था उन्होंने, मगर बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे फिर से उसे मोड़ दिया 1 रन के लिए। बहुत ही शानदार हवाएं चलती हुई मैदान में, धूप का कोई जिस तरीके का माहौल है, ऐसे जाना जाता था कि यहाँ पे आज गर्मी वाला माहौल है, तकलीफ हो सकती थी, मगर भगवान की कृपा से, स्वामी की कृपा से यहाँ पर कोई उस तरीके का एहसास नहीं। हवाएं बहुत ही तेज चलती हुई, उठा के खेलने की कोशिश, गेंद के पीछे खिलाड़ी थे, छोटी सी मिसफील्ड, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार, बल्ले का वार जिस पे लिखा हुआ था 4, गेंद जाती हुई सीधा गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए करारा प्रहार निकलता हुआ वीर के बल्ले से। मैं अपने प्यारे ब्रदर विशाल से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कुछ नवजोत सिंह सिद्धू क्लासेस अटेंड किया है क्या? क्या उसने आपका क्लासेस अटेंड किया है? Over bowled. एनर्जी ड्रिंक पिना का सांगल तुका 50 पटी ते पिओ अपनी ते तू गर्लफ्रेंड किती पिता ते तू पिना का 14 runs coming in that over. Oh, there's one more. He's declared the over. He's declared the over. Over bowled. 14 runs coming in that over. Five overs bowled, 63. Over 12 runs and over still. They're going at a good click. They're going at a good click here. 6 deliveries remain in the power play. Chandrakant is the new bowler. So readjustments being made in the field for Chandrakant's first delivery. Veer takes the aerial route. He's got the distance. That's cleared the ground. That's massive. Massive 6. Huge. Got the height, got the distance. Massive 6. All the fielders could do is see the ball sailing over their head
In fact, beyond the shamianas over here. Over the bowler's head. What a start to this over. This time this over mid-wicket. One bounce to the mid-wicket boundary for 4. That brings up Veer's 50. Half century for Veer. Brilliant innings over here. What a start to the innings. बहुत ही शानदार इनिंग वीरेन ने करी है, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जोरदार प्रहार, हर एक बल्ले का उतना अच्छा समाचार, बल्ले का पावर और उसपे लगता हुआ छक्कों का और चौकों का बहुत बड़ा शावर सभी के दिलों पे छा गया। ये खिलाड़ी देखना यह है कि इस मैच को जीतने में कितना ज्यादा योगदान दे पाते हैं वीर। यहां पर जिस तरीके का नाम, उस वीर गति से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर वीर स्ट्राइक पर खड़े। That's in the air and that's coming down. Over the shamiana. Take care of your cars. Take care of the cars that are parked over there. Veer is on a rampage over here. And I just suspect the spectators behind us, the cars behind us. Take care. This is incredible hitting. 50 came off just 21 deliveries, and pause for a moment and think he was dropped on 29. This is on the offside. A little bit of thick outside edge, but nonetheless 4 runs to the good. 2 sixes and 4. Fantastic. He's going after this in the last over of power play. दो बातें वीर के लिए जरूर कहना चाहूंगा। ये डायलॉग मेरा खुद का नहीं है, कहीं से चुराया हुआ है। अंपायर, बल्ले, गेंद और विकेट, टीम तो तेरी सारी है, भगवान के चरणों से लिपटा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है, जिसने यहां पे 50 रन बनाए थे। और वैसे ही मैंने कहा था, बैक टू बैक करारा प्रहार, गोली की रफ्तार से जाता हुआ सीधा सी मारे का पार 4 रनों के लिए। No, that was a completely different boundary over there. Exquisite square drive. The previous were all big hits, powerfully hit. That was an authentic, exquisite cricketing stroke. A lovely square cut to the point boundary for 4. Time to perfection. This one is over mid-wicket once again. Couple of bounces down to the mid-wicket boundary for 4. Power play done. Can you believe what's the score? 91. 91 in power play. Sunrisers Hyderabad recently did it in the IPL this year. Years back, I remember, Chennai Super Kings against Kings 11 Punjab did it. 100 runs in power play. Suresh Raina on that occasion got 83 incredible runs. This is 91 in power play. Now what this means is, what they need is 88 runs in the remaining 14 overs. That last over of power play cost 28 runs. Chandrakant's first over. Those catches dropped are proving to be very, very costly.
92 the score now with that single, which means they need 87. 87 in 13.5 overs. '87 in 83 deliveries. That's the exact equation in terms of runs and number of balls left. What was 9 runs at the start is almost now just 6 as the asking rate. Can they pull it back from here? They need at least 4 or 5 good overs here, Sai Avengers. Remember, it was around over number 8 to over number 12 that Sai Coastal Fighters came back into the game. This goes over the top. He's got the distance as well. Magnificent stroke of extra cover for 6. Every boundary has been peppered by this man. Incredible batting. बहुत ही ताबड़तोड़ और आग उगलता हुआ बल्ला वीर का चलता है, यहां पर देखना है इस खिलाड़ी को। अपील, यहां पर अपील अपील, मगर उसका कोई असर ना होता हुआ। वीर जैसा खिलाड़ी अगर स्ट्राइक पर खड़ा हो तो मैदान पे जब वो खड़े होते हैं तो उनको 2 चीजों से बहुत ही प्यार है। एक है सीमा, दूसरी रेखा। जो सीमा रेखा है उसके बाहर गेंद पहुंचाना इनका काम है। उठा के खेली हुई गेंद, मेरे बातों को दिल पे लेते हुए वीर ने वापस उसे करारा प्रहार कर दिया है। उतनी अच्छी उम्दा Above him. This has been an incredible batting response. What a batting display. That's one bounce. Oh, that's gone over. 6. Wade gets to his 100 in style with a 6 over wide long off. What a way to get to your 100. Well played, young man. Century with a 6. सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां। यह पहला सेंचुरी बनाया, इन्होंने पहला शतक बनाया है। इसके लिए 2 बातें यकीनन कहूंगा। पानी से नहाने से लिबास बदल जाते हैं मेरे दोस्तों, पानी से नहाने से लिबास बदल जाते हैं और पसीने से नहाने से इतिहास बदल जाते हैं। और मेरे दोस्त ये चुराया था क्या तेरा था? वो बोलता है खुद का है, क्या बताया? Four sixes, 14 fours in that century by Veer. We've been delighted. What an innings. And while we are talking about, raving about this innings by Veer, the score for Sai Coastal Fighters is 131 already, which means what they need from here on is just 48 runs. One more, make that 47 needed to win. We are still in the 10th over. 10 overs after this. This has been some kind of a hammering. I tell you what, 2 or 3 wickets over here can still turn the tide. That's the inside edge. The inside edge, not exactly very intended. A run to the good nonetheless. Sanath batted well for 84. He's bowling well.
First over conceded just 7. Good run, good run, good run. Played with soft hands, and they go across for a single. Over bowled. 10 overs bowled. For 1. 55 needed from here on. 45, beg your pardon. 40. With lunch approaching, the divine Brahmarpanam slokam just being chanted to invoke the blessings of our divine beloved Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. A run in the bargain. 44 needed to win. Good start to the over, silent start. In the air, there's a man getting on it. Will he get it? He takes it. Finally a wicket. After a long time, will this change the course of the game? We don't know. They need 2 or 3 more to really change the course of the game, but they've got one. Finally, after a brilliant 100, makes his way back to the pavilion. Let's have a round of applause for Veer, the centurion over here today. Brilliant 100. नारायण राव किधर गया? एक अच्छी पारी, ऐतिहासिक पारी खेल के अपने खेमे में बहुत ही शान के साथ वापस जाते हुए वीर, बहुत ही सीना चौड़ा रहेगा उस खिलाड़ी का इस वक्त जब वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी 100 रनों की खेली, जिसकी जरूरत थी। ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त अपनी टीम के साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। यहां पे 2 विकेट गिर चुकी थी और अपनी जिम्मेदारियों को भले भांति जानते हुए वीर ने अपने टीम के लिए वो काबिले तारीफ काम किया है जिसकी जरूरत थी। ताबड़तोड़ विस्फोटक और एक जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपने टीम को एक अच्छी सुस्थिति में लाके वापस अपने खेमे में अपना कॉलर टाइट करके वापस जाता हुआ ये खिलाड़ी। सभी दर्शकों से वापस गुजारिश करूंगा इस महान बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां। आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, उतनी जोर से आवाज, जोरदार तालियां। उधर खड़े सभी बाल विकास स्टूडेंट्स की गुजारिश, जोरदार तालियां। यस, Things might quieten down a little bit now. We're back in the hut.
The ball was flying to all parts of the ground so long as he was there in the middle. Yes, there was the stroke to be played there. A little bit late on that stroke. Wanted to bisect that gap and get boundary to short third man. Over bowled. नहीं ये अभी 134, which means 45 needed in 9 overs. एक ही रन ऐड हुआ है 35 45 needed in 9 overs means 5 runs per over. Can they bowl 2 or 3 overs for 2 or 3 runs? Not if they clobber it like that though. Well fielded in the end at the mid-wicket boundary. अभी मारा उसने क्या नाम है 136 है ना स्कोर 136 भाई स्कोर Hitesh replaced Veer. Everyone was swayed by that innings really. हाँ ऐसे कुछ है एक ही मिनट रुको ये करने के टाइम में वो चुप जाता है ना That's a reverse sweep. No runs. Yes, this is the right way to do it. Get in 2 or 3 silent overs. Bowl them fast. Give only 2 or 3 away. Get that asking rate to go up from 5 to 7 or 8. There could be a twist in the tail. Easy single over here. All those boundaries are plugged now. They're going to need singles in this over. how many singles in this over so far 3 Just the 3 singles in this over so far. Can he end it well? Deep. Swept round the corner. Well fielded. Just 4 singles in that over from Deep. 12 overs bowled. Overs bowled, 139 for 2. वो हमारे सभी समिति के जितने भी दिग्गज खिलाड़ी है सभी के स्कोर क्या है 139 पहले टीम के कप्तान हमारे सभी के दिलों में राज करने वाले हमारे एसपी उनकी टीम रहेगी नॉर्थ गोवा और उनके अगेंस्ट दूसरे कप्तान प्रदीप भाई साउथ गोवा की तरफ से कप्तानी करेंगे अगली मैच की
आते ही इन्होंने अपने मंसूबे जताए थे, आते वक्त कैप पहन के आए थे, जानते थे कि उन्हें इस मैच में खेलना है, एक तगड़ा स्कोर बनाना है, 2-4 विकेट चटकाने हैं। उस मंसूबे से मैदान में उतरते हुए प्रदीप भाई, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड के स्वरूप में मिलता हुआ और एक रन और उतनी ही अच्छी कीपिंग का नजारा, शानदार तरीके से गेंद को रोका। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए सुबोध यहां पर उठा के खेली हुई गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी देखना यह है, मगर कोई मौका नहीं, गेंद जाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए बहुत ही करारा और उम्दा प्रहार, सीधा जाता हुआ 6 रनों के लिए। इस बड़े शॉट के बाद तेजी से मगर धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर, अपने विजयश्री के कदम चूमने के लिए दोनों बल्लेबाज तैयार। देखना यह है कि इस मैच का विनिंग शॉट किसके बल्ले से निकलेगा। बहुत ही अच्छी मैच, हम सभी दर्शक और यहां पर उपस्थित हमारे सभी दर्शकों से मैं गुजारिश वापस करूंगा, इन सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। हल्के हाथों से यहां पर अपील तो जरूर हुई थी, देखना यह इस अपील पर कोई असर नहीं होता हुआ अंपायरों पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने हम सभी के दिलों पर राज करने वाली बल्लेबाजी करी, सभी के दिलों पर छा गए। बहुत ही अच्छी और इतनी अच्छी इनिंग का हम लोगों को साक्षी बनाने के लिए इन सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत। शानदार, हल्के हाथों से मोड़ दिया इस गेंद को, यकीनन 1 रन चुराया, धीरे धीरे मगर तेजी से बढ़ता हुआ रन। 144, बहुत ही शानदार तरीके की बल्लेबाजी, सेट बैट्समैन स्ट्राइक पर, अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की। सुबोध सटीक लाइन लेंथ, बहुत अच्छा वेरिएशन, अच्छा मिश्रण का प्रदर्शन करते हुए, हालांकि बहुत यंग खिलाड़ी है, अभी अभी करियर की शुरुआत करी है, इस तरीके की और अच्छी वेरिएशन की जरूरत होगी। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उन्हें मैच का चांस मिला था, बहुत तगड़ा और उम्दा विकेट, इतना बड़ा विकेट हासिल करके खुद को खुश नसीब मानते भी होंगे सुबोध। फिर से कट करने की कोशिश, हल्के हाथों से पॉइंट के दिशा में खेली हुई गेंद, 1 रन के लिए 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। यकीनन तारीफ करनी पड़ेगी सुबोध को, अभी तक बांध के रखा है, दोनों सेट बैट्समैन स्ट्राइक पर खड़े, मगर उनको उतने अच्छी तरीके से बांध के रखा है। कोई बड़े शॉट लगाने से पाबंदी लगा के रखी है, जकड़ के रखा है, अपने नाक पाश में हाथ खोलने का मौका नहीं। मैंने जैसे ही कहा उसे दिल पे लिया और उठा के खेली हुई गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी 1 ही रन पे संतुष्ट। फिर से तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ, उतने अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 147, माफ कीजिए 148, 2 विकेट के नुकसान पर। Thirteen overs bowled, 148, 31 needed in 7 overs, 42 legitimate deliveries and just 31 to get. And they go through for 1. There should be a canter now for Sai Coastal Fighters. When they put up 178, did the Sai Avengers, one thought this would be a really tough chase, but really this has been an awesome batting display. One more. When you need well below a run per ball, you really don't need any more heroics now. You can get them in singles. This time in the air, there's a man getting under it, and he floors it. Make that catch number 3 dropped in this innings.
Had those catches been taken, this story would have been different. 150 cross now. विशाल फर्स्ट एड वो देख उसका उंगली पे देख The fielder has been hurt there. Requires some first aid. Oh, they seems to be in pain. There's also some blood there. Oh, that's an injury. ए हाथ ऊपर कर ऐसा कर हां ब्लड फ्लो होगा नहीं तो नीचे Oh, that is a nasty injury. Aditya will be attended to. स्कोर कितना हुआ 151 151. 38 needed from here on. In the air, Subodh is getting under it, and he crosses it again. This has been a story of one dropped catch after another. 152 now. 27 needed. 39 deliveries remain. I was just saying some time back, what would have happened if all those catches had been taken? Remember, Veer was dropped on 29. Veer went on to get 106. Catches win matches is an old phrase. It's proved correct so often in the game of cricket. Veer's catch in particular in this game has proved too costly for Sai Avengers. He was dropped on 29, I said that. Went out to get 100, a grand 100, 106 over bowled. 14 overs bowled, 154, 25 needed. 36 deliveries left. ये ना 7 नंबर है ना सुबोध है तो उसका नाम सुबोध है सुबोध अभी जो छोड़ा ना अभी इधर आयन म्हणील पण तुका तो कर म्हणला असं बस बस मामा बाबा आपण दोन मागे घोड्या सगळे घोड्या तू मारता हंग मारिल्लो मार हंग मार हंग मार हंग मार हंग मार वन दोन Well bowled, that's a good ball. Just a trifle shot, picks the length quickly on that occasion. Square drives it. Good stop, good diving attempt there. We'll wait for the umpire's signal though, he might want to check it. Now, was his foot outside the boundary when he was in contact with the ball? That's a big question. That's declared a boundary. Yes, that was a boundary. Because when he was in contact with the ball, his foot was outside the boundary. Should be an easy single there. So Sai Coastal Fighters now just coasting away
to a very comfortable win. 160 now. Sai Coastal Fighters just 19 away. Make that 18 to win. Lovely cover drive. Will that carry down to the boundary? Will it be cut off? It is cut off. They get a couple in the bargain. Over bowled. 5 overs after that one. 16 to win. 16 to win of 30 legitimate deliveries. सनत नहीं रे बॉलर सनत Sanath bowling his last over. He bowled well so far. That should be a great 6. Down to the side screen for a 6, hard and high. And Sai Coastal Fighters want to finish it off in a hurry. I was about to say Sanath has bowled well in his first 3 overs. First ball of his 4th goes for a 6. 10 needed now. Make that 9 to win. That's in the air. Has he got the distance on that one? Yes, he has. Second 6 of the innings. Sai Coastal Fighters are coasting away to an easy win over here. Just 3 needed to win. We're just in the 16th over. 4 overs yet to bowl after this. Ball just retrieved. That's in the air. Deep is getting under. Will he take it? Yes, he does. Finally, they take one. Ayush, who's at the non-striking end, is on 49. We already saw 1 century from Deep Veer over here today. 106. Studded with 4s and 6s. Will Ayush get to his half century? 3 needed for a win. Goes for the big hit and doesn't connect. 3 needed. 24 deliveries left. Vishal, at the break we were discussing that, this could be a very close chase, could be a good game. I don't think anybody imagined this would be such a one-sided victory. नो सर, बहुत ही मतलब जैसे आपने कहा कि एक उम्दा बल्लेबाजी जो दीप ने करी, उसने इस विजय श्री को, माफ कीजिए, वीर ने करी, उसने इस विजय श्री को अपने दम पे खींच के लाया है। जिस तरीके का एक ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी, किसी भी बल्लेबाज को, गेंदबाज को उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। आते ही अपने मंसूबे जताए, शुरू किया अपने बल्लेबाजी को, ताबड़तोड़ सभी के दिलों पे छा गए, एकदम बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी।
और इस विजयश्री के कदम हल्के हाथों से खेल दिया उसे 1 रन के लिए, 1 रन चुराए, इसी के साथ 50 रन पूरे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट जिसकी जरूरत थी, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए आयुष अपने 50 रन उन्होंने पूरे करे। वीर आए, वीर ने एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, 100 रन बनाए और स्ट्राइक पर लक्ष्मण खड़े, कट करके खेलने की कोशिश, 1 रन चुराने की कोशिश यकीनन करी थी मगर कोई फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। I agree with you, Vishal. The kind of innings Ayush has played over here, we should give full marks to him. A lot of credit. Bowled him. Nowhere near the line of the ball. Head in the air, and that's what happens. The furniture gets disturbed. All that he needed to do was get Ayush on strike. Yes, talking of Ayush, full marks to him. Veer was on song, and he realized what he needed to do is just play second fiddle, occupy the crease, give Veer the strike, and then once Veer left, played some lovely strokes. Sensible batting, mature batting here by Ayush. All batters, all fielders being called into 1-run saving positions. Outside edge, and they go through for a single, and they'll probably get 2 for that. Or the ball may go over the boundary. Yes, it does. Sai Coastal Fighters win this game magnificently in just the 17th over. And what a tremendous batting performance. This has been Sai Coastal Fighters. Veer getting a memorable 100. Let's not forget, Ayush got a lovely 50. Having said that, from the point of view of Sai Avengers, they'll rue the 4 catches that they dropped. It could have been a different story. एकदम मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसे T20 मैचेस में कैच बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, बहुत ही अच्छे रोल के साथ। देखना, बहुत ही आसानी के साथ इन्होंने मैच तो जीत लिया, सभी के दिलों को भी जीत लिया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, उतनी उम्दा गेंदबाजी भी करी थी। मगर मैं सबसे पहले इन 2 महान विद्वानों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। करारी धूप में अपने पसीने को बहाते हुए मैदान में खड़े थे। बहुत ही फेयर डिसीजन, बहुत ही शानदार अंपायरिंग, बहुत ही उम्दा अंपायरिंग का नजारा। सभी से गुजारिश करूंगा, दोनों अंपायरों के लिए जोरदार तालियां। सभी खिलाड़ियों ने हम सभी के मन को बहाने वाली, चाहने वाली बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी। सभी ने सभी के दिल का खेल दिमाग से खेला। बहुत ही अच्छी उम्दा बल्लेबाजी, उतनी अच्छी गेंदबाजी, मगर थोड़ी सी फील्डिंग की कमी नजर आई। मगर ऐसी बड़ी बड़ी मैचों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसे नजरअंदाज करते हुए सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से वापस स्वागत करना चाहता हूं और सभी खिलाड़ियों के लिए वापस एक बार जोरदार तालियां।
अनिरुद्ध, सुहास, शुभम, इन तीनों खिलाड़ियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा यहां पर। गिरीश हरगेकर भाई, प्लीज रिपोर्ट ऑन द पिच। राघवेंद्र भाई, आपकी जरूरत है ग्राउंड पे। आउट है ना। सुशांत भाई, अबे आउट है ना, अबे आउट है, आउट है, अबे आउट है, लागला हाताक माल लागला। विशाल भाई ने एक गोल्ड बिस्किट लाया है 5 ग्राम्स का। सिद्धेश भाई, गोल्ड बिस्किट की क्या अहमियत तो नहीं है, मेरे इन सोने जैसे सभी खिलाड़ियों के सामने उस गोल्ड बिस्किट की क्या अहमियत हो सकती है। ये बहुत ही उम्दा और सभी के दिलों पे राज करने वाले भगवान के बंदे जब मैदान में खड़े तो भाई उस गोल्ड मेडल की या गोल्ड बिस्किट की क्या अहमियत हो सकती है। बहुत ही शानदार टीम, दोनों साइड में, साउथ वर्सेस नॉर्थ, सभी खिलाड़ी मैदान में खड़े। किधर है ग्रुप क्यों नहीं डालते? शानदार मैच जिसका आगाज करने के मैदान में खड़े हैं बल्लेबाज खुद कप्तानी पारी की जरूरत होगी। प्रदीप भाई स्ट्राइक पर खड़े, देखना यह है कि अपनी टीम के लिए कितने रन बटोर पाते हैं, मगर उतना ही करारा जवाब देने के लिए अगले कप्तान मिड विकेट में खड़े। देखना यह है कि इस मैच का क्या माहौल बन सकता है इस विकेट पर।
खेलो बोला मैं, क्या दिक्कत है? स्कोर लिखो भाई, स्कोर लिखो भाई। स्ट्राइक पर खड़े कप्तान प्रदीप, और सिद्धेश अंपायर की दारूमदार अपने कंधे पर लेके खड़े हैं। देखना यह है कि कितना उम्दा डिसीजन दे पाते इस टीम के लिए। सामने गेंदबाज साइश, जिनका सामना करने के लिए खुद कप्तान खड़े स्ट्राइक पर। देखना यह है कि क्या करम आती है और ऐतिहासिक पारी खेल पाएंगे अपनी टीम के लिए। पहली गेंद जिसका सामना करने के लिए खड़े प्रदीप भाई। पहली गेंद, गेंद सीधी जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, ना कोई रन ना कोई नुकसान। बहुत अच्छी सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट कीपर आनंद बहुत ही शानदार खिलाड़ी रह चुके। दूसरी गेंद उठा के खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद, एक रन के लिए दौड़ने की कोशिश, मगर उन्हें वापस भेजा अपने खेमे में। नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर खड़े विवेकानंद। आज करने वाला ये खिलाड़ी आज नॉन स्ट्राइकर पर खड़ा है, अपने टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हुए। जैसे हमारे सिद्धेश भाई कहते हैं, ये भीष्म पितामह है हमारे, बस नाम ही काफी है। हल्की गेंद कट करने की कोशिश, मगर बीट होती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, ना कोई रन ना कोई नुकसान। ये थोड़ा सा गैप कहा जाता है इसे। उठा के खेलने की कोशिश, फिर से बीट करने में कामयाब होते हुए साइश। गेंद वापस विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बांध के रखा है यहां पर, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया प्रदीप भाई को, फिर जाने दिया, सम्मान किया। बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट, तारीफ करनी पड़ेगी प्रदीप भाई की। और यहां पर देखना ये नो बॉल और फ्री हिट, ये इसे कहते हैं गोल्डन लॉलीपॉप। इस गोल्डन लॉलीपॉप का कितना फायदा अपने टीम के लिए उठा पाते। उठा के खेली गेंद हवा में, गेंद के नीचे आनंद, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे की एक रन की कोशिश यहां पर, ये एक बहुत ही देखना यह है कि भागने की कोशिश तो यकीनन की थी विवेकानंद भाई ने, मगर थोड़ी सी तालमेल में कमी, मगर उसका कोई बहुत बड़ा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी। देखना यह है सभी खिलाड़ियों को, यंग खिलाड़ियों को जो अभी खेल में उतर
कट करने की कोशिश, गेंद बीट होते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। आनंद खड़े तो बस नाम ही काफी है, विकेट के पीछे से कोई गेंद जाने का कोई मौका ही नहीं। उठा के खेली हुई गेंद, अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग का नजारा, 1 रन पे संतुष्ट होना, और यहां पे ये बल्ले से निकलने वाला पहला रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। स्ट्राइक पर खड़े हैं प्रतीश, एक उम्दा खिलाड़ी इस टीम के। उठा के खेलने की कोशिश, बीट होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, ना कोई रन ना कोई नुकसान, बहुत ही शानदार। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर में एक बड़ा विकेट और बड़े एक महान खिलाड़ी को इंजर्ड करके बाहर भेजा है नीलेश ने। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उठा के खेलने की कोशिश, बीट होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बहुत ही शानदार सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए सभी गेंदबाज। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेल दिया सीधे बल्ले से, 1 रन तो यकीनन चुराया, दूसरे की मांग हो सकती थी मगर 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ तेजी से मगर धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा होता हुआ। प्रतीश के लिए फुल टॉस गेंद, वापस जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी गेंदबाजी और क्लीन बोल्ड, उम्दा बल्लेबाजी, सटीक लाइन लेंथ और एक लगता हुआ तीसरा झटका। वापस जाना पड़ेगा यहां पर प्रतीश को। और सभी, यह था करारा प्रहार, गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए बल्ले का करारा प्रहार जिस पे लिखा हुआ था बल्ले का करारा प्रहार जिस पे लिखा हुआ था 4, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार, करारा प्रहार 4 रनों के लिए। फिर से उठा के खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, आनंद ने उसे थ्रो किया था मगर थोड़ी सी तालमेल में कमी, मिलता हुआ जीवनदान। और पाटिल काका थोड़े से चोटिल जरूर हुए थे मगर हौसला बुलंद है उस खिलाड़ी का, अभी भी मैदान में जाने की ताक में खड़े थे मगर उन्हें रोके रखा है। फिर से फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेल दिया, यहां पर साइश भाई खड़े, अच्छी तरीके से उसे फील्ड किया, यकीनन अपने टीम के लिए 1 रन चुराया। और विवेक भाई आप क्या कहना चाहते हो सभी खिलाड़ियों के लिए? हाउस द जोश? हेलो, हाउस द जोश? साई राम टू एवरीबॉडी। यस, इसे कहते हैं जोश, इसे कहते हैं ताकत, इसे कहते हैं हिम्मत। आज यहां पर अपना उम्र मायने नहीं रखती है, बस जोश मायने रखता है। सभी यंग खिलाड़ियों ने इस महान बल्लेबाज से सीख लेनी जरूरी होगी। अगर वो आपका साथ कोई ना दे, आपकी उम्र भी साथ में ना, अगर साई का भक्त उसी जोश की तरह मैदान में खड़ा आए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, सभी का दिल खुश किया और वापस आए। थोड़े से चोटिल जरूर हुए मगर उस चोट पे उन्होंने मात करके सभी का दिल जरूर जीत लिया। और यहां पर प्रदीप भाई बैठे अपने खेमे में। प्रदीप भाई थोड़े से टेंस, थोड़ा स्कोर कम हुआ है उनकी टीम का, और आप एक छोटे से माइक से उनके दिलों की धड़कन सुन सकते हैं। सभी दर्शकों के लिए उनके दिलों की धड़कन मैं यकीनन सुनाऊंगा। ये थी कप्तान प्रदीप भाई के दिलों की धड़कन। चाहते हैं अपने टीम के लिए बहुत बड़ा स्कोर बनाए, सभी खिलाड़ी खेले, मगर एक कप्तान जिस उम्मीद से खेलना चाहते थे मगर खेल नहीं पाए, वापस आए मगर दिलों की धड़कन बहुत तेजों से चलती हुई वो बहुत बड़े स्कोर की ताक में खड़े मैदान में, उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए
उठा के खेलने की कोशिश, गेंद सीधा जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, ना कोई रन ना कोई नुकसान। बहुत ही अच्छी सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सभी उम्दा गेंदबाज और सभी खिलाड़ी अपने कप्तान के भरोसेमंद खिलाड़ी गेंदबाज क्यों है इसका नजारा आप सभी के सामने। उठाई हुई गेंद हवा की रफ्तार से और ये बहुत अच्छा उम्दा शॉट। यहां पर अंपायर का डिसीजन पेंडिंग, ये क्या हो सकता है? अंपायर जी से गुजारिश करूंगा ये 6-4 या विकेट, कृपया हमारे सभी दर्शकों को बताएं इस शॉट पे कितने रन मिलेंगे। और अंपायर जी ने अपने हाथ उठा के विकेट और खुद बल्ला लेके मैदान में बल्लेबाजी के लिए, ये बस यहीं पर हो सकता है, दुनिया के किसी मैदान में ये नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं यूनिटी। इसे यूनिटी कप क्यों कहा गया है उसका ये जीता जागता नजारा आप सभी के सामने, इसे कहते हैं यूनिटी, इसे कहते हैं एक साथ खेलना, इसे कहते हैं स्वामी के भक्त, स्वामी के डिवोटीज। उठा के खेलने की कोशिश, थोड़ी सी बाहरी गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, मगर उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। यहां पर सिद्धेश एक उम्दा खिलाड़ी रह चुके हैं, अपनी उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे, इन्होंने बहुत ऐतिहासिक पारियां भी खेली है। देखना है आज अपने टीम के लिए कितने रन बटोर पाते हैं। उठा के खेलने की कोशिश, वापस फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी का नजारा, फिर से मिलता हुआ एक वाइड और अतिरिक्त रन। स्ट्राइक पर अभी भी सिद्धेश भाई, यहां पर सिद्धेश भाई के बहुत से फैंस मौजूद हैं जो चाहते, जो उन्हें चेयर करना चाहते। सबसे बड़े फैन मोहन, यहां पर सभी के दिलों पे राज करने वाले मोहन आज यहां पर खड़े थे सिद्धेश भाई को चेयर करने के लिए। पहले दिल से सामने तो आए थे, मगर इसी के साथ बहुत अच्छी शॉट भी लगाई थी। देखना यहां पर कितने रन बटोर पाते हैं। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 14 रन। यहां पर एक करारा प्रहार, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और एक बड़ी मछली फांसने के लिए यकीनन जाल बिछाया था, मगर फटे हुए जाल के वजह से मिलता हुआ एक जीवन दान। बड़ा खिलाड़ी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी का नजारा। वापस स्ट्राइक पर खड़े सिद्धेश, एक ताबड़तोड़ और खूंखार बल्लेबाज माने जाते हैं। उठा के खेलने की कोशिश, थोड़ी सी तालमेल में कमी, गेंद बीट होती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहां पर सभी दर्शक चाहते हैं कि आज सिद्धेश भाई का बल्ला बोल जाए। एक महान खिलाड़ी के बल्ले से रन बनने बहुत जरूरी होते हैं। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। जैसे जैसे अतिरिक्त रन मिलते हैं यहां पे स्कोर बढ़ता है। कप्तान के दिलों की धड़कन वापस आप सभी लोगों के लिए। बहुत जोरों से धड़कता हुआ दिल यहां पर कप्तान का, और ये हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी। एक रन यकीनन चुराया, दूसरे की मांग हो सकती थी, मगर वो कैसे मुमकिन था जब वहां पर आनंद मौजूद था। आनंद ने उस गेंद को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया और दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे आखिरी ओवर पास आती हुई, मैं वापस आपको प्रदीप भाई के दिलों की धड़कन सुनाना चाहता हूं। और यहां पर सिद्धेश भाई के लिए बहुत से फैंस यहां पर मौजूद है। ईशान भाई की पहली गेंद उठा के खेलिए, ये वो करारा प्रहार जिस पे लिखा हुआ था कुछ भी नहीं, 2 रन जरूर मिलने चाहिए थे, मगर एक ही रन पे संतुष्ट होके नॉन स्ट्राइक पर खड़े सिद्धेश भाई। फील्डिंग उसे किया था नीलेश ने। ये नीलेश एक अपने वक्त के बहुत महान खिलाड़ी रह चुके, अच्छे गेंदबाज रह चुके, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते थे। स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज जो सामना करेंगे ईशान भाई का। ईशान भाई ये अपने गोवा रणजी टीम के पहले खिलाड़ी रह चुके, बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने टीम के लिए दिया था। यहां पर नीलेश ने वापस उसे यकीनन गेंद को रोका, यकीनन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। अगर
इस बॉल को उन्होंने अच्छी तरीके से फील्ड किया तो अपने टीम के लिए यकीनन उन्होंने 3 रन बचाए। धीरे धीरे मगर तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। उठा के खेली हुई गेंद, गेंद हवा में, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, गेंद के पीछे 3 खिलाड़ी, गेंद के पीछे छोटा सा नन्ना मुन्ना खिलाड़ी विराज तो दौड़ रहे थे मगर पीछे से दूसरे खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को उठाया और थ्रो किया बॉलर की दिशा में। बस 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खेलने की कोशिश मगर सटीक लाइन लेंथ, जिस तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद थी यहां पर ईशान भाई की तरफ से, उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। सिद्धेश के लिए करारा प्रहार, सिद्धेश के बल्ले का वार जिसमें लिखा हुआ था 4, गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार, करारा प्रहार 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा शॉट। इस करारे प्रहार के साथ स्कोर जाता हुआ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई गेंदें 2 बहुत ही निर्णायक रह सकती इस मैच के लिए। फिर से मैं कप्तान की दिलों की धड़कन आपको सुनाना चाहता हूं। उठा के खेली हुई गेंद, गेंद में हवा में, गेंद के नीचे साइज भाई यकीनन दौड़े थे मगर गेंद को पकड़ नहीं पाए। पहला रन पूरा, दूसरे की मांग और यहां पर बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा विकेट। वापस जाना पड़ेगा सिद्धेश भाई को। आनंद जिस तरीके से गेंद को लपका, देखा, जांचा, परखा और अपने एक पुराने कलाकार रह चुके देवानंद, उनकी स्टाइल में उन्होंने उनको स्टंपिंग किया और आउट किया। सिद्धेश भाई को वापस चलता किया। आनंद ने देवानंद के स्टाइल में उसे स्टंपिंग करके वापस भेजा अपने खेमे में और लगता हुआ 5वां झटका सिद्धेश भाई वापस अपने खेमे में। अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, मानिए इस इनिंग की आखिरी गेंद। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, उतनी अच्छा उम्दा फील्डिंग का नजारा, उतनी अच्छी कीपिंग करी है आनंद ने। बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त ये खिलाड़ी, जहां पे भी खड़ा हो वहां पे अपनी छाप छोड़ने के लिए माहिर खिलाड़ी। उन्होंने गेंद को आते देखा, परखा, जांचा, रोक भी लिया, रन बचाए। फ्री हिट, गोल्डन लॉलीपॉप। उठा के खेली हुई गेंद, करारा प्रहार, गेंद के पीछे नीलेश। ये वो खिलाड़ी है जिसके हाथों से गेंद निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात होती है। 1 रन पे संतुष्ट होने की जरूरत थी मगर 2 रन उन्होंने पूरे करे। सभी दर्शकों से एक गुजारिश आती हुई कि कमेंट्री मराठी में सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने पेश करता हूं मराठी में। तोच ताबडतोड बल्लेबाज फलंदाज मैदानात उभा आहे, तो चेंडूची वाट पाहतो, तो अतिशय सुंदर पद्धतीने टोलवण्याचा प्रयत्न होता। अतिशय सुंदर गेंद, चेंडू हवेत, चेंडूच्या खाली होता तो आनंद। अतिशय सुंदर टिपलेला झेप आणि परत जावं लागतं त्या ह्या खेळाडूला, परत पाठवलेला आपल्या तंबूमध्ये या खेळाडूला। ह्याच प्रमाणे लागतो तो 7वा झटका प्रदीप भाईच्या टीमला। आणि परत तुम्हाला सांगतो, प्रदीप भाऊंच्या हृदयाची धडकन जर तुम्हाला ऐकायची असेल तर पुन्हा एकदा त्याचप्रमाणे एक छोटीशी थोडसं घातलेलो चेंडू वयता तो वाईटच्या दिशेन आणि तितल्या सुंदर पद्धतीने त्या चेंडू काढलेलो। बॉल फाटल्यान आनंद उभो म्हणल्यार आणि दुसऱ्या कसल्याच गोष्टीची गरज ना। आनंदान अतिशय सुंदर पद्धतीने चेंडू थांबयलो, आपल्या टीमासाठी 3 रन वाचयले। सुंदर पद्धतीने टोललेला चेंडू वैर वयता तो आनंद त्याच्या फाटल्यान। आनंद 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 आणि अतिशय सुंदर अपील, अंपायरन बॉट उकललेले असा। याच प्रमाणे लागता तो 7वा झटको आणि परत येवचो पडटा तो बॅट्समनाक आपल्या। और सभी के दिलों की धड़कन वापस खेमे में आती हुई सिद्धेश भाई के लिए जोरदार तालियों की जरूरत। ये वो खिलाड़ी है जो हमेशा ताक में रहता है, हर एक खिलाड़ी तालियों का भूखा। और ये पहला मिसफील्ड
आनंद की तरफ से ये गलती, इसे गलती नहीं गुनाह कहा जाएगा। जितनी उम्मीद आनंद पर पूरे खिलाड़ियों को है, आनंद बस नाम ही काफी है। ये छोटी सी मिस्टेक और इस तरीके से मिलते हुए 4 अतिरिक्त रन। आनंद ने यकीनन इस कैच को पकड़ा है। वापस जाना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। इसी के साथ एक बहुत अच्छी पारी खत्म। यहां पर एक गुजारिश आई थी सिद्धेश भाई की तरफ से, चाहते थे कि विवेक भाई के लिए एक अच्छा सा डायलॉग कहा जाए। ये मेरा डायलॉग तो नहीं है, चुराया हुआ डायलॉग है, फिर भी मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा, बल्ले विकेट्स, अंपायर और गेंद, टीम तो तेरी सारी है, भगवान के पैरों से लिपटा विवेक भाई मेरा अब भी सब पे भारी है। साइश भाई ने यकीनन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए, बस बहुत शानदार। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति और इस इनिंग की समाप्ति। अगले बल्लेबाज दूसरे टीम के जल्द से जल्द बुलाए जाए और इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर में 37 रनों की जरूरत। अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं तो 38 रनों की जरूरत होगी। स्ट्राइक पर खड़े खुद कप्तान, बस नाम ही काफी है। सभी के दिलों पे राज करने वाले खिलाड़ी आज स्ट्राइक पर खड़े, बल्लेबाजी अपने टीम के लिए। इस इनिंग की शुरुआत करने के लिए स्ट्राइक पर खड़े एसपी और उनका साथ देने के लिए वाइस स्टेट प्रेसिडेंट आनंद नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं, लेकिन अंपायरिंग कर रहे वाइस स्टेट प्रेसिडेंट साइश। पहली गेंद महेश भाई के लिए। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। गेंद के नीचे सिद्धेश भाई और एक क्या लपका है कैच, वापस भेज दिया यहां पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी करारी फील्डिंग का नजारा। पहली गेंद पे वापस भेजा है महेश पाउसकर को और लगता हुआ पहला झटका खाता भी नहीं खोल पाया अपने टीम का और अपना वापस चलता किया। उन्हें वापस जाना पड़ेगा अपने खेमे में। बहुत ही अच्छी
फील्डिंग का नजारा होता हुआ सिद्धेश भाई, इसी के लिए कहा जाता है, ये क्यों खास है, इसी के लिए तो खास है, सभी के दिलों पे राज करने वाला खिलाड़ी सिद्धेश मैदान में खड़ा। दूसरी गेंद हल्के हाथों से खेली हुई गेंद, और यहां पर दूसरे विकेट का पतन, नॉट आउट करार दिया गया है। अपील तो करी थी मगर कोई असर नहीं हुआ इस पे। नारायण राव को कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द बुलाया जाता है, कृपया नारायण राव कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। करारा प्रहार, गेंद सिद्धेश भाई के पास। इस क्रिकेट की दुनिया में मैंने एक बात जरूर देखी है, अगर एक खिलाड़ी से गेंद को प्यार हो जाए तो आप उसे कहीं पे भी छुपाइए, वो गेंद वहीं चली जाती है। उसी तरीके का खेल चलता हुआ सिद्धेश भाई अगर कहीं पे भी खड़े हो तो गेंद उनके पास ही जाती हुई। वापस उठाई हुई गेंद, हवा में गेंद के पीछे दो खिलाड़ी, एक रन पूरा, दूसरे की मांग हो सकती है, छोटी सी मिसफील्ड का नजारा, और यहां पर 2 रन पूरे। गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, यहां पर 1 रन पूरा, दूसरे की मांग हो सकती थी, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे आनंद, मगर उन्हें अपने खेमे में वापस भेजा। बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करते हुए दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी यहां पर। बहुत बड़ा स्कोर, 3 रन बन चुके अब तक। स्ट्राइक पर खड़े आनंद, उठा के खेलने की कोशिश, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रतिशायी गेंदबाजी के लिए अगले गेंदबाज हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया। 1 रन यकीनन चुराया, दूसरे की मांग हो सकती थी, दूसरा रन के लिए दौड़ना चाहते थे मगर वापस भेजा अपने क्रीज में आनंद को। स्ट्राइक पर आनंद खड़े, हल्के हाथों से कट करने की कोशिश, ना कोई रन ना कोई नुकसान, गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। हल्के हाथों से कट करने की कोशिश मगर उम्दा गेंदबाजी। बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ, सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए यहां पर। अब तक तो कोई मौका नहीं दिया इस गेंदबाज ने। डिफेंस किया 1 रन के लिए। अगर इस मैच को जीतना है तो ऐसे डिफेंसिव शॉट और इक्के दुक्के से कोई बात नहीं चलेगी। यहां पर ताबड़तोड़ अपने गियर अप करना पड़ेगा आनंद को, और आनंद वो एक खिलाड़ी है इस मैच को जिताने का दम रखता है। देखना यह कि अपने टीम के लिए कितने रन बटोर पाता है, आने वाले समय ही बताएगा। हल्के हाथों से खेला, 1 रन चुराया, दूसरे की मांग हो सकती थी मगर 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। अगली गेंद, इस मैच को जीतना चाहते तो
एक विस्फोटक बल्लेबाजी की जरूरत होगी। उठा के खेली हुई गेंद, मगर उतना अच्छा तालमेल और संपर्क ना होता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, और एक डॉट स्वरूप की निकलती हुई गेंद। वास्को के दमदार खिलाड़ी अनिरुद्ध न्यूपानी, उठा के खेली हुई गेंद, मैंने कही बात उसे दिल पे लिया और करारा प्रहार तो यकीनन किया। पहला रन चुराया, दूसरे की मांग, 2 रन पूरे। देखना यह कि तीसरे के लिए दौड़ना चाहते थे, मगर 2 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे मगर तेजी से बढ़ता हुआ 8 रन, 1 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर। जहां पर एक अपने स्कोरर अमित भाई खड़े हैं, बैठे हैं यहां पर। 4 ओवर में 30 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 30 रन। आनंद स्ट्राइक पर खड़े, नॉन स्ट्राइकर पर अमिताभ के सुपुत्र अनिरुद्ध। बहुत ही शानदार, थोड़ी सी बाहरी गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश तो यकीनन करी थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। बहुत अच्छी लाइन लेंथ नहीं कही जाएगी, मगर एक अच्छी गेंद जरूर कही जाएगी इस गेंद को। 22 गेंदों में यार ये एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के स्वरूप में। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश भाई चाहते हैं कि उठा के खेली हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में, 1 रन तो यकीनन चुराया, मगर जिस तरीके की बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है, इस मैच को जीतने के लिए आपको आपके बल्ले से आग उगलने की जरूरत होगी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और कुछ बड़े शॉट की जरूरत होगी इस मैच को जीतने के लिए। मैं यकीनन तारीफ करूंगा सभी गेंदबाजों की जिन्होंने अब तक बांध के रखा है दोनों खिलाड़ियों को। उठा के खेलने की कोशिश, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन, दूसरे की मांग हो सकती थी। आनंद ये खिलाड़ी माने जाते चीते की चाल और हिरन की चुस्ती से दौड़ने के लिए, मगर आज उतना तालमेल की कमी, उतने रन नहीं बटोर पाए वो अपने टीम के लिए। और अपने स्वभाव के विपरीत खेलते हुए आनंद, ऐसे देखने जाओ तो एक बहुत तेज दौड़ने वाले रनर है। मैराथन में हर बार बड़े बड़े खिताब इन्होंने जीत लिए हैं, और आज हमारे टीम के मलका सिंह स्ट्राइक पर। अरे वो मलका था, उसको गलती से मिल्का बोलते थे। खेलने की कोशिश, 1 रन, दूसरे की मांग हो सकती थी, मगर 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। चलो भाई, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कमेंटेटर बोर हो गया। ज्यादा जोर मत लगा। दीदी दीदी बात कर, ये दीदी दीदी कमेंट्री कर, मेरे को नहीं आता। हल्के हाथों से खेली हुई गेंद। मैं चाहता हूं मेरे दोस्त के सर आए और 2 अपने बातें इस मैच के लिए बताएं। सिस्टर श्रेया
शैलेश भाई यहां पर आए हैं सभी कितना ओवर बाकी है भाई? ये चौथा चल रहा है ना? चलता हुआ चौथा ओवर। इस मैच को जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद उठाने की कोशिश, मगर बीच होते हुए देखना यह कि अंपायर का डिसीजन क्या हो सकता है। सनद और दूसरे कप्तान हितेश दोनों को जल्द से जल्द टॉस खेला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच में। दो ओवर वाइड बॉल एक वाइड और दो और बचे. यो 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 त्या रस्त्यान सरळ पुढे यो, त्या रस्त्यान सरळ पुढे यो. तसोच ग्राउंड तो फुडल्यान येलो की दिसतलो तुका यो. कट करने की कोशिश,
Welcome back to the afternoon session of play. Avengers versus Sai Coastal Fighters. Avengers batting first. Sanath and Kaustubh has the ball in his hand. And Sanath continues from where he left off in the morning, but this time fielded at backward square. Yash Gadekar opening the batting with Sanath. Didn't get going in the morning, Yash Gadekar. Let's see if he can give a good account of himself here now. Just as the outside edge is pushed at it. Will feel better, gets his first runs. That brings Sanath Nevgi. This match will be 12 overs aside. Power play will be 4 overs. Power play 3 overs, all right. There's no stopping Sanath Nevgi today. That's down to wide long on for 4. The first boundary of this innings. So 12 overs aside and power play of 3 overs. Wraps him on his pads, outside leg, I guess. In fact, there was more of optimism rather than hope in that appeal. Yash Gadekar. Log leg right on the boundary. Third man on the boundary. Pulled away and wides for 4 as he went after it. So productive over already, this one from Kaustubh. Oh, that's a ram shot. One bounce over the wicket keeper for 4. Yash Gadekar, lovely stroke. Knew exactly what he was doing. Got under the ball, rocked his back, tilted the face of his bat, just directed that short ball over the wicketkeeper for 4. That brings in a fielder, Viru, just behind the wicketkeeper. But a lovely ram shot, that one. Close to the tram lines. Normally the kind of delivery one sees in the death overs. Ends over number 1. Kaustubh's first over. 16 runs of that over. In the morning's play, he conceded 16 runs in his second over. In the afternoon, he's conceded 16 runs in his very first over. 16 for no loss, 1 over bowled.
Mithil Karekar. That's a good ball, draws the batter forward. When you bowl that kind of length, the batter's in two minds, front or back, you've won half the battle. And if you bowl wicket to wicket, you can't take too many liberties. Just a trifle shot, punch through, extra cover for 4. He's so quick to pick length, Sanath Nevgi. Just a trifle short. Picked that length so quickly, rocked onto that back foot, punched it through extra cover for 4. Glorious drive. So there is a fielder right on the mid-wicket boundary. Remember in the morning, he peppered the mid-wicket boundary with 6s, wide long on with 6s. So the mid-wicket boundary has a boundary rider. There's also a boundary rider at extra cover. That's in the air. That's hard and high over long on. 6 runs. Just wait to see whether the ball has cleared the ground or are they able to retrieve it. It'll be some search, I tell you. That was hit with tremendous power. I think he's managed it. Yes, yes, yes. Once again, just holds that length back, but no difference for Sanath Nevgi. Again goes over long on, hits a side screen on the full. Tremendous power, tremendous timing. Gets right under the ball quickly. Has got long levers, has got a long reach. This one is short. That's gone a mile. That's gone a mile. That's gone to the forest area to the left of us. Go fetch it. You can't fetch it. No, probably you need a replacement ball. The fielder is making an attempt, but as he retrieves the ball, one must say, you pitch short, he pulls you. You bowl good length, he lofts you over mid-wicket or long on. So there's very little room for error. You've got to get that length spot on with Sanath Nevgi. Get him in two minds front to back. Bowl that nagging length, that line. Don't give the ball too much air. Not much trajectory. Not much of a loop. He's going to get under it. And by way of variation, if you bowl flatter through the air and shorter, you get pulled. So for Sanath Nevgi, there's very little margin for error. And that's why it may be very important to bowl a run that off stump to him, not a leg and middle line. And as the ball is getting retrieved, we must all maintain uppermost in our minds, on the front burner, the whole objective of the Sathya Sai National Cricket League. As we did say at the start of play today, just before the start of play today, the whole objective here is to get people together, bind people with love, spread Bhagwan Shri Sathya Sai Baba's message of love, unity, togetherness, camaraderie, oneness. We're all one. We're all bound by love, and we play together in love
We compete in love. Love and togetherness and unity is the bottom line of the Sathya Sai National Cricket League. The search for the ball is on, and so I think the wait is for the fielders to come back to the field of play. The replacement ball has been given, so the fielders can come back to the field of play. That's a good ball. That's the line I was talking about. Ball around that off stump. Don't bowl in his hitting arc, otherwise you'll go out of the park. Ends over number 2. 38 for no loss. What a start. Seven, 8. Sanath is 27 in 8 balls. He missed out on 100 in the morning. I wonder whether that's working in his mind. Even though this 12 over game, let me give it a shot. Veer got 100. Let me try and get one over here. Niranjan is the new bowler. Will be interesting to see how he bowls. Too much width outside the off stump, too far outside the off stump. Wide declared. Will it be cut off? Just suspect it is. So they also take 2 runs. So add those 2 runs to the wide. 3 runs accrue. 41 for no loss. Just 13 deliveries in this innings. Short in length, and he'll feel he missed out on that, Yash Gadekar. Short in length. Wanted to punch it through covers, didn't quite get hold of it. Picked it up from inside. There's a fielder getting under it, but sails over him for a 6. That was beautifully played. Short in length. He was committed to the front foot there. Went through with his stroke. Flat patted it almost over extra cover for 6. Yash Gadekar showing intent here. Short, and this time he goes to the other side. Clears mid wicket for 4. Slowed down the ball on the way to the mid wicket boundary. Ultimately clears the mid wicket boundary for 4. With that, Sai Avengers are 51. They've crossed their 50. This is just the 3rd over. Boy, oh boy, this is some start here. That's a full length delivery. Should be cut off. It is just the 1.
one delivery left in this over from Niranjan. 11 runs so far. Two deliveries. There was a wide in this over. He was bowling round the wicket to the left-hander, trying to bowl around that off stump, which is a good idea. Now when the right-hander comes in, bowls over the wicket, again trying to bowl around that off stump. But for somebody like Sanat Negi, whether you bowl outside the leg stump, leg in middle, or outside the off stump, doesn't matter. That was over pitched in the slot, and it went over long off for 6. Magnificent stroke. As we start the 4th over, 58 for no loss. Sanat Nevgi is 35 of that. Mithil. Mithil to start a fresh over from the far end. Didn't quite get hold of it. Should get cut off inside the orthodox mid-wicket boundary. Just the one. Didn't quite get to the pitch of that one to try and play the stroke he wanted to. Wanted to loft it hard and high over mid-wicket. Ball just a trifle shorter than he expected. Readjustments. Kaustubh being moved to point. Yes. Close to the umpire who's there at point. Will it be cut off inside the long on boundary? A good attempt made. Yes, it stopped. Good fielding. Good fielding. Good attempt there. Right on the boundary. Wide spaces on the onside. Nobody inside the 30-yard circle. This is interesting. 3 boundary riders, though. And he goes after it from outside the off stump. Wants to hammer it away. There's a man there right on the orthodox mid-wicket boundary. There's a man on the mid-wicket boundary. And there's a man right on the long leg boundary. Will be cut off. Should get cut off by Kaustubh there. Oh, lovely square cut.
Wonderful square cut. Picked the length so beautifully. Rocked onto that back foot. Square cut it away to square third man for 4. Glorious shot. Yash Gadikar seems to be saying, I'm arrived. I've arrived. Some lovely stroke play. Particularly in the offside as Sai Avengers go up to 66. 66 in 4 overs. Some start this. More than 16 runs per over. They're waiting for some instruction from the dugout, I guess. Maybe a new batter is being sent in. We'll wait and watch. Or are they changing the wicket keeper? Probably giving another Sai brother opportunity of keeping wickets in an attempt to see how well he can keep. It's a good idea, really. At the end of the day, this is to get people together, give everybody an opportunity, give everybody a chance to play, give everybody a chance to perform. So this is a good idea. Hitesh Talwar, we did see him bowling in the morning as well. Sanath Devgi has tonked it, literally tonked it. A good chase there. Just about makes it to the boundary. Just enough legs to go to the extra cover boundary for 4. Good chase there by the fielder. Didn't give up till the very end. The ball beat him by just a few feet. In the air, a little bit uppish, outside edge. Will it be cut off inside the square third man boundary? No, it carries down to the boundary for 4. Sanath Devgi is on 43. Will he get to a second 50 of the day? Oh, that's beautiful play through the covers. Will be cut off though. Good running there. They create an opportunity for a second and go through for 2. .45, Sanath Negi. That's the kind of delivery I've been talking about. A run that off stump or off a middle, not in his hitting arc, just back of a length, faster through the air. Oh, a little bit more of loop. Doesn't quite get hold of it on occasion.
was attempting to dispatch it to wide long on. But the power behind that stroke, even though he got the inside edge, not the middle of the bat, goes down to the fielder there, Kaustup at the orthodox mid-wicket boundary. Just a run. Man being brought to square third man, just outside the 30-yard for Yash Gadekar. A man also being shifted to square leg inside the 30-yard. Now being shifted more to a long leg inside the 30-yard. That's the over bowled. 5 overs bowled. Hmm? 77 for no loss of 5 overs. More than 15 runs an over as of now. 12 over game. Another 7 overs remain in this. Atharva bowled so well in the morning. It'll be nice to see him bowl a couple of overs in the afternoon. Just sent down one delivery. Oh, that's a full toss. Asking for punishment and duly punished. Slog swept for 4. Rubs his hands on the floor. Didn't he grip that ball well? Down the wicket. That's gone sailing over long offside. Hits the side screen in front of us. Magnificent 6. Yash Gadekar is on song now. Yash Gadekar is 32. Sanath Nevgi is 45. Fetched that from outside the off stump. Once again, gives a lot of loop and goes over the bowler's head for 4.
If you've got to give that loop, you've got to get your length perfect. You over pitch and you go for runs. That's what's happened to Atharva in this over. "17 runs of that Atharva over. Sanat Devgi is on 48. Closing on to his second 50 of the day. Panshu the covers. Glorious extra cover drive for 4. Brings up his second 50 of the day. Sanat Devgi, 52 not out. 5 fours and 4 sixes in that. Brilliant. As the ball is being retrieved, we saw a lovely game of cricket between the senior members of the Goa Samiti in the afternoon, in between the two competitive games. The whole objective of that was to bring everybody together in love, happiness, joy, togetherness. And the way and the spirit in which that game was played was absolutely wonderful. There was a lot of joy, happiness, fun all around this cricket ground, among all the spectators, the players, just about everybody. Really bringing people together. That's our whole objective over here of the Sri Sathya Sai National Cricket League, as there is Sanat being attended to after getting his 50. Is it his ankle or his toe? Certainly is being attended to. The umpires also on looking. It's taking a fair amount of time out there in the middle. So one wonders what's the issue about. Maybe cramps also.
So all is set after all the attention the batter received. 52 he is. Shorter length, and that'll be dispatched. Moment that was shot, we knew that's going down to the boundary, which it did. That also brings up the 100 for Sai Avengers. 100 on the board. Seventh over in progress. Oh, that's a neatly played, tucked away on the onside for a single. Yash Gadikar, of course, has been executing flowing strokes on both sides of the wicket. This time content with gentle push on the onside, just tucks it away for a single. That single took Yash Gadikar to 38. He must also be aiming for a half century here. That's gone over long off. Hit with tremendous power. Magnificent six. Yash Nevgi. Got right under the ball. Lofted it hard and high. What power. The moment it was hit, we knew it's coming down for a six. This time, lovely on drive, just a single. After 7 overs, Sai Avengers 110 for no loss. 5 more overs remain in this Sai Avengers innings. Hitesh now to continue bowling operations. Lovely stroke, made room for himself and played that lovely inside out punch through extra cover for 4. Remember, this was not just slogging. This was not power hitting. Glorious off drive. Gave himself room. Went outside the leg stump and punched it through extra cover for 4. Exquisite stroke, that one. This time probably just a single on the other side of the wicket. Yash Gadikar now.
Well, Tosta waits for it, turns him round the corner. Very fine, very deftly played that one. And they go through for 2. Loved the way he played that ball. Waited for it, very last moment. The roll of the wrist. But leg by signaled. So that he didn't get bat on ball. I thought he probably got some glove onto that, the top part of the bat. But the approach to that ball was good. Wanted to play it very late, played very fine. Flatter through the air, goes over the bowler's head. 6 runs! What a shot that. Just a step in front. Got under the ball, hard and high, went sailing over long on for 6. "44, Yash Gadekar. Tries to play the scoop and he's given him. He's given him out. He is distraught, yes, Gadekar, but he's got to go. Gadekar is gone. That's the first wicket for Sai Avengers. Deep given a chance up the order now in the second innings. Was out for 5 in the morning. Here is his opportunity to give a good account of himself. As Sanat Nevgi motors along. Man is getting on it. Will he take it? Oh, he grasses it. Hitesh this time puts down Sanat Devgi. He had enough time to get under the ball. Enough and more time to take that. Unfortunately grasped it. Deep now. Well tossed up, driven through the covers. Just the one. There could be overthrows here. So one more by way of overthrow. Hitesh, well tossed up once again, driven into the covers, but fetch him just the one. What's a line that he will bowl out to Sanat Nevgi?
was bowling outside off to deep. That's in the air. He's grasped it. Can you believe it? Even Kaustup drops Sanat Nevgi. Taken some wonderful catches earlier on in the day. But that just shows even to the finest of fielders this can happen. Sanat Nevgi survives. Waits for it and with an angle bat runs it down for a single. In the morning, he was dominating. Sanat Nevgi in the afternoon has lived a charmed life. Both the catches he offered should have been taken. That's outside the off stump. That's been pummeled away to extra cover for 4. Spare a thought for Hitesh. Catch was dropped off him and then he goes for 4. End of the over. overs हो गया ना है 126 for 1. 9 overs bowled. 3 overs remain. 18 legitimate deliveries remain in this innings. So Veer comes in. Let's see what he can do with the ball. We want a second. It's not there. Single to start. We saw what he can do with the bat earlier on. A magnificent 106. What an innings that was. Let's see what he can do with the ball now. These are reasonably big boundaries, mind you. They are not short boundaries. So you've got to really time the ball well or put tremendous power to clear them. That's why I said that. Reasonably big boundaries. You've got to time the ball well, find the gaps, or put tremendous power and get the over boundaries. Well tossed up. Good ball. Almost in the block hold. Good thinking. We haven't seen too many Yorkers in all the games since play started today morning. Not the easiest of deliveries to bowl though, particularly for amateur fielders. A couple to be had for that. Deep has got a start over here. Can he convert it? Just about 2.5 overs left. Goes down the wicket. There's a man getting under it. First bounce. That was not a catch. That didn't carry at all. Deep will want to play a few aggressive strokes and make an impact in the 2.5 overs or so that are left. Well bowled. That's very well bowled.
seeing the batter giving himself room to play the inside out stroke, pushed it through on the off and middle. Good thinking by Veer. Over bowled. 132 for 1 at the end of 10 overs. Good stop, an extra cover, wonderful stop. Brings deep into strike. Let's see if he can exhibit a repertoire of strokes in the 11 deliveries that are left now. There's some movement about the side screen. Down up again, he skied it in the air. Kaustubh is getting under it. That's 6. He can only see it sailing over his head. Over the long on boundary for 6. Lovely lofted on drive there. Got under it. Knew exactly what he was doing. Got a 6 to long on. This time goes hard at it. Should be cut off at super cover, just a single. Tries to play the reverse sweep and completely falls over. There's a demand to see Vishal out there in the middle. He may not get a chance in this innings, Vishal. Just 1 over left. But Vishal, as I know him, he'll say, I'll play from the other team also. He'll say, I can play from anywhere. I'll just change jerseys and play. I'm an impact player. I can play anywhere, any team, anytime. .141 at the end of 11 overs. The last over now in progress. Down the wicket over the bowler's head. Will be cut off by Kaustubh. Good fielding this. Had to cover a lot of ground. Very well done. Restrict to just a single. Just a trifle short punch through the covers. That'll be 4 to extra cover.
Glorious, glorious shot. He picks up length so quickly. I said this before. Sanat Nevgi. Just a trifle shot, rocked onto that back foot, pummeled it through extra cover for 4. Oh, completely doesn't make contact. He did get some wood onto that. I thought he didn't make contact, so a run there. That makes him 85. Oh, that's lofted over the bowler's head. Will be cut off by Hitesh. Just a run. Two deliveries left in this innings. Bowled him, clean bowl. Now, will Vishal Vernikar come without pads on? He removed his pads thinking that there's no chance. So Vishal Vernikar comes in to play the last ball. विशाल was just telling me, Mr. Scorer, that scoring में गलती हो गई है, एक और ओवर बाकी है. मेरे को एक ओवर मिलेगा बैटिंग के लिए अभी. स्कोरर की गलती है. Goes after it, doesn't make contact. Wild swipe at that one. So that's the over bowled, 12 overs bowled.
Vasami goes after it, does with. He's connected it beautifully. First six of the Sai Coastal Fighters coming from Veer's Boy. Oh, this time is the pickup shot. Has he got the distance? Will it for the umpire signal 4 runs to square leg. Over pitched on the leg in middle. The pickup shot was on. Went to square leg for 4. So 4 runs off the free hit. This time he's gone once again, taken the aerial route, found the distance, hard and high, over mid-wicket for another huge 6. 6-4-6. That's the real story. Runs in the first over. They've started well. Sai Coastal Fighters. Remember, they're chasing 149 in 12 overs. Vishal Vernekar with the ball in his hand. Square cut away. In the gap, 4 runs. What a way to start the over. Short outside the off stump. Lot of it on that one. And dispatched away to the square 10-man boundary for 4. 24 on board in 7 deliveries in this innings. They've started well. The Sai Coastal Fighters chasing 149. Oh, that may go down for buys or wides. We'll wait for the umpire signal. Leg buys. So there was a tickle on the pad there. 4 leg buys. .28 on ball already. 8 deliveries in this innings and 28 on board. Short and length. There goes for the uppercut. There's a man getting under it. And it. Oh, he's gassed it. Goes through him. Down to the cover point boundary for 4. Three consecutive 4s, though one were by ways of leg buys. Got under it nicely. Covered a lot of ground, but ultimately went through him.
Short and land. That's it. Pulled away past one wicket for 4. Wonderful, wonderful stroke there by Ayush.
will be cruising along like they did in the morning. Subodh into the bowling attack. Short and length, goes after it, bisects the fielders there on the onside. The 45 and the square leg down to the boundary for 4. As I always say, feels good to start the over with the boundary for the batter. The bowler has to play catch up now. Ensure that he doesn't give too many in this over. Well tossed up down the wicket he comes. Vishal makes a lot of ground, gets under it. Good attempt. Ball eludes him down to the wide long off boundary for 4. That's Deep, I beg your pardon. Deep, who made a lot of ground there. But good attempt. That really wasn't a catch, but one must give full marks to Deep. Covered nearly about 10 meters to his left. Tried to make a catch of it. Not the easiest of chances. You need to judge the ball in the air. The sky. Dive at the right time. They've got the boundaries in this over. They'll take the singles. Lovely stroke for just a 1. Picked the fielder the Deep there. At sweeper cover. So 10 runs in this over already. 2 more deliveries left. 2 boundaries and 2 singles. This time that's through the onside. Will be once again cut off at the orthodox mid-wicket boundary. 11 in this over so far. Like the way he tossed that ball up. Will this be tossed up or flat through the air? Tossed up outside the off stump. Also got some turn on that one. Ends the over with a dot. 11 in that over. From Subodh. कितना ओवर हो गया? 5 overs. 85 for 1 at the end of 5 overs. 7 overs left, which means 42 deliveries left. 64 runs needed. 64 runs of 42 deliveries. That's the equation. This could be actually a very interesting finish here. Sanath's first delivery is drilled to long on for a single. Bowled well today morning, Sanath. Short in length, faster through the air, well bowled. Rolls his wrist, whipped away on the onside. Good running, good cricket all round. Couple of runs. Didn't give the ball too much air. Not giving the batter liberties there. Pushed it through the air. Faster through the air. The batter also to it. Rolls his wrist for a couple. Short and land, the leading edge. Falls short of the fielder there at point. Just the 4 runs in 3 deliveries. Whipped away for a single.
At the start of this over, they needed 64 or 42. 2 or 3 good overs like this where they give only 5 or 6. Short in length again, just a single. As I said, 2 or 3 good overs like this, we could be in for a fantastic finisher. Well tossed up, drilled. Deep will cut it off, a long off. Just the one, 7 runs in that over. .57 needed of 36 now. And that's why I said couple of good overs here. Bring it down to somewhere around 45 of 24. It could be a very interesting finish. The next 2 overs, very, very important in the context of the game. Let's also bear in mind that Ayush played some wonderful strokes in the morning. We did see 6s and 4s from him. He took his time, played a supporting role to Veer, and then when he opened up, we saw a fine repertoire of strokes. So he's got the ability to hit 4s and 6s. Meanwhile, Deep continues from the far end. His second over. His first over cost him 13. Flatter through the air. Hard and high. He's found the distance this time. That's exactly what the Sai Coastal Fighters wanted. That will make them breathe much better. Picked it up from in the slot and deposited it over mid-wicket for 6. I did say in the morning we saw Ayush opening up after spending time out there in the middle. He's got the propensity to hit 4 and 6s. He's come up with a 6 now. Flatter through the air, drill to long off. Oh, that's gone through for 4. Wide of the fielder there, long off actually. For a moment one thought that could be cut off, but the timing on that was very good. Went through for 4. A 6 and a 4. Brings up the 100 for Sai Coastal Fighters. 100 up on board. Chasing 149. Ayush once again goes over the man at square leg. 4 runs, 1 bounce to the boundary for 4. Just waited for the umpire's signal. Which means the ball bounced just behind the fielder. Six, 4 and 4. 14 of the first 3 deliveries. Exactly what Sai Coastal Fighters wanted. They wanted a very good over. Short and land, and that's been punched away down to sweeper cover. They'll get a run for that. 15 and 4 deliveries in this over. That brings Hitesh to strike. Goes after, doesn't make contact, lucky for him. Doesn't ricochet onto the stumps. Dot ball from Sai Avengers' perspective. Last ball of this deep over coming up. 15 runs in this over so far.
Flashes through the air, gently played with soft hand into the covers. 2 dot balls to end the over. Five overs remain. 42 needed of 30. The reverse sweep, beautifully timed all along the carpet for 4. Magnificent stroke. Some people will say that reminds them of Rohan Kanhai. The falling sweep, this time the falling reverse sweep. Kanhai was known for that falling sweep. This was the falling reverse sweep. But how well did he time it? All along the carpet. Knew exactly what he was doing. Bisected the gap for 4. 50 up for Ayush. Second half century of the day. Wonderful batting in the morning and in the afternoon. Takes his team to 112 now. 37 needed. Didn't quite get hold of it there, Hitesh. The Lamel across for a run. Sorry, मैंने गलती बोल दी. 113 बराबर बोला. 113, 36 still needed. Overthrows, overthrows. These are precious runs. 2 of them. You can't leak such runs. This can be a tight situation even now. 2 freebies. 2 runs leaked when just a run was there on the cards. 2 extra runs leaked. It's a good ball. एक ही बॉल है ना. 8 runs of this over from Subodh so far. Well tossed up in the air. Will be cut off at long off. Just the 9 runs in that over. Eight overs bowled. 119 for 1. 8 overs bowled. 30 runs needed, 24 deliveries. This is getting to be a really good finish. A wicket or 2 over here. Pressure, pressure on Sai Coastal Fighters. 1 good over here and they'll coast along. Next couple of overs so important. 30 needed of 24. Yes, not in that, not much of air given to that one. That was a perfect length, drawing the batter forward. Just a run. From Avengers' perspective, they won't want to give boundaries. Once again, that length in the air. Oh, that goes over the boundary. 6 runs. It was airborne for a long time, and that's why one had to wait
and see whether he gets the distance. He did. Short in length, just a run. Such a predictable response from bowlers. One ball is tossed up, goes over long on for a 6. The next ball, 9 times out of 10, is short. Short in lane, whips it away around the corner. Eight runs in this over, 3 deliveries to go. This time once again, lofts it out and high. He'll get the distance. Big 6 over mid wicket. Magnificent shot in the slot, and he hoisted it hard and high. Is this the over that Sai Coastal Fighters wanted? 14 already, 2 deliveries left. $133 on board, 16 needed now. दो ओवर short and length, punched into the covers, bit of a fumble, allows them to go through for 1. 12 needed now, 1 more delivery in the Sanat over remaining. That's the over bowled, okay. As per our calculation here, there was 1 more delivery, but umpires got it right. Over bowled. $15 runs in 18 deliveries. Vishal with the spinners, a little bit up pace, 2 extra cover, will carry down to the boundary for 4. Lovely boundary there from Hitesh. $11 needed for a win now. Dot ball there. $10 needed for a win now. $15 deliveries. Make that 9 needed for a win. 14 deliveries. A little bit of a fumble allows them to go through 4. No, they're content with 1.
8 needed for a win, 13 deliveries. Goes after it, doesn't make contact. Over bowled. 8 needed for a win in 2 overs. Sai Coastal Riders in the morning, Coastal Fighters in the morning, chased down 178. They won in about 17.4 overs. They won at a canter and now need 8 in 12 deliveries. Atharva comes in for the penultimate over of this innings. When you get time now. ये भैया आएगा आपसे डेटा लेने के लिए नितिन भाई हाँ ठीक है. That's in the air. There's a man getting onto it. Sails over him. 4 declared by the umpire. I still wait for it. Yes, 4, 4. 4 declared by the umpire. कितना हो गया अभी वो आपकी बात किया उन्होंने हाँ गड़बड़ कर दिया कितना कितना हो गया 4 डाले ना कितना हुआ 45 हो गया. Within a stroke of victory, 145. This time they go hard and high. 6 runs. What a way to bring up the victory. With a 6, Sai Coastal Fighters win the second game over Sai Avengers. Again, by 9 wickets. With 7 deliveries to spare. They won the first game of the day also. Beautifully in just 17.4 overs. Sai Coastal Fighters winning both the games played here today. Congratulations to them. But I tell you what, cricket has won over here today. For me and for all of us over here, cricket has won. Because the teams played both the matches in the true spirit of love, camaraderie, friendship, unity, togetherness. And that's exactly the spirit of the Sathya Sai National Cricket League. Let's hear a big applause for both the teams for upholding the whole ethos and the thought process behind the Sathya Sai National Cricket League. One may have won, one may have lost, but that's on paper. But Swami's message of love, camaraderie, friendship, unity, we're all one, oneness, has been heightened today. That's the message that's been spread today by both the teams that played out there in the field. Congratulations for both the umpires. Gentlemen, you've done a wonderful job through the day, and we're really grateful to you. So the second match of the day being won by the Sai Coastal Fighters by 9 wickets. They won the first game of the day as well. Congratulations and well done to the umpires by the State President, Mr. Pavaskar. Applause to both the teams. Well played, boys, well played. You played as all of us wanted you to play. Played as one unit. Played with love. Played with camaraderie. And played as one team with unity. Congratulations to both the teams. Sai Ram. We'll have presentations in a short while.
because I have a dislocation. But no, Swami says I will do it. And what I did, we were staying very close to Chepauk. And then I caught hold of our keeper, Mr. Gawande, and I told him, just please help me. And we both of us went to Chepauk early morning at 9 o'clock. And I started throwing ball from the boundary area. And I confirmed, and that time I think Mr. Gundappa Ishwanath was watching us, he was having his breakfast and all. But anyway, I managed to see that my hand is okay. Next day, when the game started at Chepauk, we were put to bat first. And I went 3 down. 2 down was Mr. Rajabini, who got out for a 0. And then when I went, I will tell you, I scored 80. But it is like, it's like telling Mahesh, but if Swami tells Mahesh, come and give a lecture on economics, you will know. But suppose after the lecture, somebody comes and says, what, you gave a lecture? Same thing happened to me. I scored 80 runs my debut on Chepauk, and that was so wonderful. And again, one more miracle that Swami happened with. See, I was more accustomed to play with spinners. And just 1 hour before I went, it so happened that ball was hit in the outside boundary, and it got lost. And then the new ball has to be taken, and that was made old by Lushing. 15 minutes were spent to find the ball, and I was more comfortable for spinners. And that time I had opportunity to play against Shivram Krishnan, Ashish Kapoor, W.V. Chandrasekhar, who were the Ranji stalwarts, who had been winners of Ranji Trophy from 90 to 95. They were the best. And I managed to be in the team that year. But to my bad luck, when I came back, where I was working, our company did not sponsor me for the next matches and all, because they said they had to put your PL and all. Of course, that time in 90s, 80s and all, it was not as professional as it is now. But now, it is so professional. I request all the players, especially all these youngsters which are seen, try to make use of these 5 Ds. Understand, learn something from these great cricketers and enhance your cricket. Definitely, you will do well. I wish you all the best at your next match in Pune. Thank you very much. Thank you. साईराम, धन्यवाद निशान बाब. आमकां मोटिवेटिंग तुमी सांगलें की कशें तुमचे एक्सपिरियन्सीस रणजी खेळपाचे आशिल्ले. आतां हांव रिक्वेस्ट करता बाब विपुल फडके, जे आमचे आजचे चीफ गेस्ट आसा, जे GCAचे प्रेसिडेंट जावन आसा, ताणें आमकां 2 उतरां सांगून आमकां मार्गदर्शन करचें. ओम साईराम. हांगासर हजर असलेले सगळे मानेस्त, सगळे स्वामीजींचे भक्त, सगळे क्रिकेटर्स, तेंच्यो फॅमिलीज आनी बाकी सगळे क्रिकेट मोगी हजर असलेले सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. आयज खरें म्हटल्यार पयली ही लीग ऑर्गनायज करपी कमिटी, श्री सत्य साई ऑर्गनायजेशन, करेक्ट, सारकें हांव फूल नांव घेता, तांकां पयलीं हांव अभिनंदन करता की हे स्पोर्ट्साच्या फिल्डान त्यांनी ही लीग घडोवन हाडली आनी ह्यो मॅचीस केल्यो. तशेंच ज्यो टिम्स पार्टिसिपेट केला, ज्या भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केला, तांकांय अभिनंदन करता, तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता, तांकां बऱ्यो विशीस दिता, आनी जी टीम जिखला तांकां चडांत चड कॉंग्रॅच्युलेट करता. खरें सांगपाचें म्हटल्यार हांव कंटिन्यूस अशे इव्हेंट्स एटेंड करता, क्रिकेट इव्हेंट्स, आयज एक फाल्यां एक सगळे इव्हेंट एटेंड करता. पण हांगासर जेन्ना पावलो, देर वॉज अ ब्लेस्ड फिलींग फॉर मी जेन्ना हांगासर येयलो तेन्ना. हांव आतां संजय बाबाकूय सांगतालो की देर वॉज अ सेन्स ऑफ कामनेस. कित्याक आतां केन्ना केन्ना जेन्ना इव्हेंटाक पावता तेन्ना घाई गडबडी नासता, सगळे पळयता, आनी इट इज अ गेम फूल ऑफ थ्रिल्स. T20 म्हणटा जाल्यार कमी ओव्हरीची म्हणटा जाल्यार, बट हांगासर येतकूच एक सेन्स ऑफ कामनेस आसलो. दॅट इज डेफिनेटली बिकॉज स्वामीजींचो आशिर्वाद, आनी स्वामीच्या आशिर्वादान तुमी जो अंडरटेक केला, डेफिनेटली एक सेन्स ऑफ स्पिरिच्युअलिटी, कामनेस हो आसतलोच ह्या इव्हेंटाक. तशेंच ईशान बाबान सांगलें, सरान सांगलें की ज्यो 5 Ds जे लायफान फॉलो जावंक जाय, नॉट ओन्ली इन स्पिरिच्युअलिटी, नॉट ओन्ली इन स्पोर्ट्स, बट म्हाका दिसता हे एस्पेक्ट रेग्युलर लायफान हे जावंक जाय. आनी डेफिनेटली स्पिरिच्युअलिटी आनी स्पोर्ट्साक कनेक्ट करपी हे सगळे एस्पेक्ट आसतलेच. हे सगळे भुरग्यांनी फॉलो करचे.
एक खंय ना खंय तरी जेन्ना हांव GCAचे म्हणटा त्या टायमार वी आर द प्रायमरी बॉडी वीच डील विथ क्रिकेट इन गोवा आनी क्रिकेटीक फुडें कशें काडपाक तें आमी पळयता. आनी आमची पेरंट ऑर्गनायजेशन म्हणटा ती BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. आनी सदीत एक बरो सेन्स आसता, हाय मॉरल ग्रावंड आमी घेता की इंडियान जर क्रिकेट कोणी फुडें व्हेला जाल्यार अशा ऑर्गनायजेशन व्हेला आनी आमी व्हेला म्हणून BCCIचें नांव सदीत वयर काडटा. पण म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर क्रिकेट कोण फुडें व्हेला जाल्यार BCCI वांगडा बाकीचे जे फॅक्टर्स कॉन्ट्रिब्यूट करता, फॉर एग्जाम्पल तुमची संस्था आसूं, ह्या म्हाका दिसता संस्थाच्या प्रमाणे आनी बाकीच्यो कितल्योच संस्था आसा जेंच्यांनी ही खरी क्रिकेट म्हाका दिसता गांवांनी फुडें व्हेला. आनी खरें ग्रास रुटा वयल्यान जर कोण भुरगे डेवलप करता जाल्यार म्हाका दिसता तुमच्या विचारान जे फुडें सरला ते डेवलप करता. फक्त BCCI किंवा GCA क्रेडीट घेवन फायदो ना, जाल्यार ह्या सगळ्या संस्थांनी जे काम आयज पर्यंत क्रिकेटी खातीर केलां तांकां खरें म्हटल्यार क्रेडीट वयता. बिकॉज BCCI आनी GCA जाल्यार कामूच प्रायमरी आहे. तुमचें काम मे बी प्रायमरी येनासतलें, खंय ना खंय तरी स्पिरिच्युअलिटी वयल्यान डायवर्ट जावन तुमी ह्या ज्या कामाक वयता ते सोशल फॅब्रीक जो वर्ल्डाचो आसा किंवा इंडियाचो आसा आनी सोशल जे हे आसा तांकां तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक वयता. एक बरे युथा खातीर फ्युचर डेवलपमेंट करपाक म्हणून तुमी इनिशिएटीव्ह घेतला, त्या खातीर परत एकदां तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. GCA कडल्यान जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज पडटली, वेदर इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज सपोर्ट, म्हाका दिसता आयज हो ग्रावंड खरोच बरो आसा. हांव म्हाका दिसता बाब कमला प्रसाद यादव जेंचो ग्रावंड आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी तुमकां सपोर्ट केलो. GCAच्या वाटेंतल्यान जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज पडटली खंयच्याय ग्रावंडाची, इन्फ्रास्ट्रक्चराची किंवा हेल्पाची, GCA असल्या बऱ्या कामा खातीर सदींच फुडें आसतली. तुमी स्वामीजीच्या आशिर्वादान हे फुडें व्हरचे. तुमचे खुबशे फॉलोवर्स आसा जे एक्स क्रिकेटर आसा, तुमी सांगताना एग्जाम्पलां सांगली म्हाका, वेदर इट इज VVS लक्ष्मण, सचिन तेंडुलकर, जे फुडल्या तुमच्या फूल एका फायनल्साक येतले बी, अपियरूय जातले आंध्र प्रदेशान, तेंच्या तुमी सपोर्टान आनी तुमच्या एक नेट धरून आनी स्वामीच्या आशिर्वादान तुमी सगळें कार्य फुडें व्हरा. डेफिनेटली बरें कितें तरी घडटलें आनी युथांचें फ्युचर खंय ना खंय तरी तुमी बरें वचपाक एक काम करता म्हणून तुमकां हांव शुभेच्छा दिता. म्हाका हांगा आफयलो, 2 उतरां आयकली म्हाजी म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा तुमकां. देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद फडके बाब. आता आमी एक्चुअल जे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आहा ताजे कडेन वळुया. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन पयलीं जे आमचे जे सगळे प्लेयर आशिल्ले तांकां सर्टिफिकेट आनी मेडल दिवन तांचे आमी सन्मान करुया. लिस्ट हय, तर आमचो जो पयली टीम आशिल्ली साई युवा गोवा 1 जे सकाळी खेळिल्ली, तातूंत सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता पयली रजत शेट कॅप्टन, नेक्स्ट यश गडेकर वायस कॅप्टन. यश, टिमीचे सगळ्यांनी रेडी रावचे. हय, तुमकां सांगलां सगळ्यांक. रिक्वेस्ट करता ईशान बाब, महेश बाब, तुमी हांगा येवन तांकां मेडल्स आनी सर्टिफिकेट दिवचे. डॉक्टर बोबे प्लीज. प्रदीप भाई. यश गडेकर, सनत नेवगी, नितीन भंडारी, दीप कसवणकर, राहुल भंडारी, सुबोध नायक, चंद्रकांत मडकयकर, प्रीतम बडगी, डॉक्टर नवदीप शिरोडकर, मोहन कनोज आणि यजूर देश भंडारी. कृष्णकांत जी प्लीज कम. medals, Yash Gadekar, Vice Captain. Yes. Yogi. Nitin Bhandari.
शेवटची नोटीस घेवन हांव विजय सरा कडेन गेल्लो. सर म्हणलें हांव पत्रिका घेवन तुमकां दिवपाक येता. म्हाका म्हणपालें कांयच गरज ना, तू फक्त आपल्याक व्हॉट्सॅपार धाड, आपूण तुज्या कार्यक्रमाक पावता. आमच्या संघटनेच्या एक ल्हानशा नोटीसीक त्यांनी इतलो मान दिलो, त्याच्यासाठी त्यांचे मनापासून आभार आणि जोरदार ताळ्यो GCA प्रेसिडेंट आमचे सरासाठी. आयज जे इतले सुंदर खेळ हांगा जालो, जितलेय खेळाडू हांगा आशिल्ले त्यांनी आपल्या जाता तितल्या प्रयत्नाचो पराकाष्ठा करून आमच्या सर्वांचे एकदम सुंदर पद्धतीन मनोरंजन केले. त्या मॅचाच्या फर्स्ट जी मॅच झाली, त्या मॅचाचो मॅन ऑफ द मॅच कोण आसपाक जाय तुमच्या मतान? यस, करेक्ट. सो वीर यादव इज अ मॅन ऑफ द मॅच ऑफ फर्स्ट मॅच. इज अ any guess? Match is a man of the match. Ayush Walekar. हाय वोल्टेज मॅच चलताली, तितू भितर जशें हांव कायम कॉमेंट्रीन सांगता, आग उगलने वाला बल्ला जो चलतालो तो वन ऑफ द बेस्ट बॅट्समन सनत नेवगी. जे जीते जागते उदाहरण जे म्हणतात, तर विवेक पाटील आमचे भाई अतिशय सुंदरपणे येले. त्यांनी 2 जणांचे येले, मन जिंकले सगळ्यांचे, आणि ते त्या मॅच मॅन ऑफ द मॅच त्यांना आम्ही त्या मॅचसाठी. खेळाडू हरेक कलाकार हो भुको असता तो टाळ्यांचो. ज्या खेळाडूंनी हांगा बरो परफॉर्मन्स दिला तांकां लागून जोरदार ताळ्यो. आवाज जाय आनी जोर. जय साईराम. साईराम.
द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट खंयचो प्रोग्राम जालो म्हणटा तो ऑफर ऑफ ग्रॅटिट्यूड. आमी थँक्स म्हणटात बट ग्रॅटिट्यूड जर मात करता वी स्टार्ट विथ अवर GCA प्रेसिडेंट विपुल फडके सर, as well as member Aditya sir, Sanjay sir, Ishan bhai, the lighthouse actually about the tageli history aikalela. Apart from it, जी ह्या मॅचीक शोभा हाडिल्ली म्हणटा पळय ही ल्हान आमगेली मानकुळी भुरगीं वालोड तुमकां, यू ऑल हॅव मेड द डिफरन्स फॉर टुडे. जितले पळय स्टुडंट्स पार्टिसिपंट्स आयल्या, खेळपी आयल्या, you all have did a fantastic. You all have showed ki playing is important as well as sportsmanship is also important, and we really thank you all for your performance. Last, काल एक सिंपल एक इन्सिडेंट जालो. विशाल बायलो दुसरो चलो भियान. इट वॉज नाईट टायम आट काळोख जालो ग्राउंडार. ही केम आपल्या उदक जाय म्हणून पावलो. आपल्या बॅगान आसा, बॅग वॉज हियर एंड वी वर एट द पीच. तो येवन उदक पिवन गेलो एंड ही सेड परत आयलो, तूं यो म्हणून पावलो परत आनी हात घेवन आयलो आनी म्हाका सांगपालो आपल्या उदक पिवपाक दी आं. आनी ज्या टायमार हांव उदक पितलो न्ही तेन्ना तूं म्हजो हात सोडनाका आनी तूं राव. आय फेल्ट न्ही लायक स्वामी सेंग की हांव तुजो हात घट धरून आसा, तूं म्हजो हात केन्ना सोडनाका म्हणून. दिस इज वॉट इवेंच्युअली न्ही रियलायजेशन की एक ल्हान भुरगो ताका कितली समज आसतली की कोण उदक पितना हात सोडून परत वतलो, तो सांगता हात म्हजो घट धर, आपूण उदक पितलो तेन्ना. लास्ट अवर कमला प्रसाद सर फॉर दीस ग्राउंड अवेलेबिलिटी आनी सगळे फॅसिलिटीज ऑल वे रावंड. वी थँक यू. स्पेशली हीज लिटल एंजल्स वीर यादव एंड अवर सिस्टर हर्षिता. शी मेड द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स. ज्या टायमार आमी फर्स्ट टायम ग्राउंड पळोवपा आयले न्ही, सच ए हंबल गर्ल न्ही, फेल्ट लायक न्ही शी हॅज टॉट अस न्ही वॉट इज ह्युमिलिटी इज अबाउट. अपार्ट फ्रॉम इट फर्दर गोईंग वी हॅड अवर समिती ऑर्गनायझेशन 9 समितीज अक्रॉस होल ऑफ गोवा, स्टार्टींग विथ नॉर्थ एंड साऊथ 2 डिस्ट्रिक्ट. आमची नॉर्थ हातूंतल्यान म्हापसा, मागीर पणजे, रायबंद्रा, करमळे आनी कुणे ही आमची नॉर्थ गोवा 5 समितीज आसा. एज वेल एज साऊथ सायडीन वास्को, मडगांव, सावड्ड्या आनी फोंडा. मागीर टोटल इन गोवा वी हॅव 9 समितीज. 9 समितीचे 9 समिती कन्व्हिनर्स आर देर. दे आर ऑल एक्टिवली इन्वॉल्वड फॉर दीस क्रिकेट मॅच. बट अपार्ट फ्रॉम दीस आय रियली वॉन्ट टू थँक अवर शैलेश भाई. कितें द वे हे प्रिपेरेशन आसा, बॅकग्राउंड प्रिपेरेशन आसा, I have no words nih the way he has worked out apart from his work schedule. A big applause for Shailesh bhai. Shailesh bhai, please. It does better. Some a great applause. आणि एक last is the dream. विशाल भाईली एक ड्रीम, एक क्रिकेट टुर्नामेंट अक्रॉस होल ऑफ इंडिया जावपाक. The concept which was taken up by our All India President, working out Kurun for last 1 year, and this Unity Cup, what Swami has blessed. So it was his dream, what Vishal had planned, was thinking about. Swami made it happen. So a great applause to Vishal also. Ani, this is just a start. Like the way जे open arms जे आमकां विपुल सरान दिल्ले आसा. So this is just a start. What best we can give, what facility we can give to our children, we'll give. So again, thanks to you. At the same time, we have to cheer our team who is supposed to go to Pune for the zonal tournament. आणि आमी वतले पुण्या आणि आमकां पुट्टपर्ती वचपा जाय. And in Puttaparthi, we have to play like champions and bring the trophy to Goa. Thank you. तसेच आमच्या ऑल इंडियाच्या कोर टीमातल्या ह्याच्याप्रमाणे विपुल सराक हांव आजच आमंत्रीत करता. ही मॅच 15 तारखेक आमची 15 मेच्यान स्टार्ट जातली झोनल. तितून भितर आमी पार्टिसिपेट करता. महाराष्ट्र ईस्ट वेस्ट मुंबई
गुजरात, राजस्थान एंड गोवा हो आमचो नॉर्थ झोन. तेजे मॅचेस चड करून पुणा आसतले. तुमकां जर वेळ मेळ्ळो तर तुम्ही अवश्य थंय येवचे. त्याच प्रमाणे जी फायनल जातली ती ऑगस्ट म्हयन्यान फुटबर्तीक, त्या फायनली मॅचीक तुमकां हांव आयजच आमंत्रीत करता. भगवान करो की आमची टीम फायनलीक आसतली, पण वॉट एवर जे कितें जाता तितून तुम्ही फायनलीक जाय अशी ऑलरेडी परमिशन वयल्यान घेतली. आनी तेणी म्हाका सांगलां की आज आमचे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आनी आमच्या जे टिमाचे हे आशिल्ले तेणी पयलींच सांगले की जे GCA प्रेसिडेंट आसा तांकां आजच तूं आमंत्रीत कर की तेणी फायनलीक ऑगस्ट म्हयन्यान, हांव डेट तुमकां कळयता, तुम्ही वेळात वेळ काढून येवचो, स्वामीचे दर्शनय थंय घेवचे अशी तुमकां विनंती. नारायण भाई आरती स्टार्ट करेंगे. हाँ स्टार्ट कर. डफली डॉक्टर कम डफली आगे रुकने का रहे. डॉक्टर ने स्टार्ट करना. नहीं एक मिनट बैठ. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक प्रति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवं मरियं कयुमीरे स्वामी मरियं कयुमीरे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूपा ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय
बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूति परमं विचित्रं लीला विभूति परमात्मैष्टात् मोक्षप्रदानं बाबा विभूति आश्रयामि। परमं पवित्रं बाबा विभूति परमं विचित्रं लीला विभूति परमात्मैष्टात् मोक्षप्रदानं बाबा विभूति इदमाश्रयामि। परमं पवित्रं बाबा विभूति परमं विचित्रं लीला विभूति परमात्मैष्टात् मोक्षप्रदानं बाबा विभूति इदमाश्रयामि। साई विभूति इदमाश्रयामि। लीला विभूतिं इदमाश्रयामि।